Applicant along with others were occupying the car, therefore they were in conscious possession. Heard the counsel for the parties. Considering the quantity of contraband which has been seized and fact that applicants are not having any criminal antecedents and records, and co-accused in the case has already been enlarged on bail. On grounds of parity, application is allowed. इसका नंबर डाल दें. Oblige. 37 हाँ वो सेम है. number 36 1377 liter liquor has been recovered in Paj. 1377 liter. अंडर से बराबर. During the election period, मतलब is अंडर से मिली है. अंडर से. हाँ, इनका ये कहना कि चुनाव में दुकान बंद रहती है, इसलिए हमने कलेक्ट की थी. और अंडर में कहना है सर. इनके कॉन्शियस पोजीशन से कैसे बताएंगे आप? जी. यस. बस यही आया. इनका प्रीवियस कन्विक्शन है? नहीं सर, कोई कन्विक्शन. Applicant has filed first application under section 439. It is submitted that police station offences. It is submitted that there is no previous conviction of applicant under section 34(1). Therefore, no offence under section 34(2) will be made out against the applicant. It is further submitted that liquor was not seized from conscious possession of applicant but from an old dilapidated house. Full stop. In these circumstances, applicant be released on bail. Government advocate opposed and submitted that huge quantity of illicit liquor, that is 1377 bulk liters, has been seized from the applicant. Offence is made out. He may not be released on bail. चार्जशीट पेश होगी? No. कब से हैं आप जेल? सर 16-11 से. जेल में चले गए? हाँ सर, 16-11. It is heard the counsel for the parties. Applicant is no longer required in police custody as investigation is as custodial investigation is over and he is sent to jail and now in under judicial custody. Contraband illicit liquor has not been seized from the applicant. Considering there is no previous conviction, first time offender allowed. 50,000 one surety. number 38 Lord, this is first bail application under section 439. Offence punishable under section 294, 323, 506, 147, 148, 120B, 327 and 355. Only 327 is not non-bailable offence. Other offences are bailable. क्या किया आपने? हमारे खिलाफ 327 का कोई एलिगेशन ही नहीं है सर. इनने FIR पेश की है. Yes. ऑब्जेक्शन के साथ. Yes. उसका रिलेवेंट पोर्शन में पढ़ देता हूँ सर. FIR भी 24 घंटे बाद है और जहाँ घटना हुई है उससे 1 किलोमीटर दूर है थाना. Yes. और 24 घंटे बाद FIR है. ये एलिगेशन पढ़ देता हूँ सर. मैं मदन महल गुरुद्वारे में था. उसी समय हैली भरद्वाज व राहुल सिंह सोडियम जिनका संचालक आए. मुझे हैली बोला 1 मिनट आपसे बात करना है. बोलते हुए बाहर ले गया. रोड पर जिनकी बात को लेकर हैली मुझे माँ बहन की गंदी गंदी गालियां देने लगा. मैंने गाली देने से मना किया तो जुगराज उपल सहज मरवा पकड़कर मुझे गिरा दिए. सभी लोग हाथ घूंसों से जुगराज और दूसरा कौन है? जुगराज और एप्लीकेंट जो है सर जोरावर. हाँ, पर हमारा नाम शुरू में भी नहीं है. शुरू में भी नहीं आया. Yes. ये जोरावर और नीलेश की बेल है सर. Yes. तो जुगराज उपल मरवा मुझे पकड़कर गिरा दिए. सभी लोग हाथ घूंसों से लात से मारकर सिर की पगड़ी गिरा दी और बाल पकड़कर खींच रहे थे. कुछ देर बाद पुनीत सिंह, जोरावर सिंह प्रेजेंट एप्लीकेंट, नीरो रांझी, नीलेश विश्वकर्मा प्रेजेंट एप्लीकेंट एक राय होकर आए. मुझे रोड पर सभी लोग हेली कड़ा से, पुनीत सिंह हेलमेट से, नीरो पत्थर उठाकर मारपीट किए. हमारे खिलाफ मारने का भी एलिगेशन. Yes. जिससे मेरे दाहिने आंख, ऊपर नीचे जबड़े, सिर, सीना, पसली, पेट एवं पीछे में चोट लगी है. पहले जो ऑफेंस रजिस्टर हुआ सर वो सिर्फ 294, 323, 506 में रजिस्टर हुआ FIR में. Yes. बाद में फिर 147, 148, 120, 327 और 355 बढ़ा दिया. 327 का 24 घंटे बाद FIR है. हमारे खिलाफ कोई एलिगेशन नहीं 327 का. Yes. और जेल में सर 1 महीना करीब हो रहा है. Why 327? But the initially FIR registered there are 8 person. One of the Heli, Sahaj, Puneet, Jugraj, Joravar, Niro, Nilesh and Rahul. Yes. The initially FIR registered in section 294, 323, 506, 34 of IPC. Yes. And as per the after giving the statement of the injured, one Narinder Singh,
But may I read the statement? Yes. What up? दिनांक 17/11/23 को शाम 5:30 बजे की बात है। मदन महल गुरुद्वारा गया था। गुरुद्वारे में गुरुप्रीत सिंह जगदीश सिंह से बात कर रहा था। हैली भरद्वाज राहुल जो कि सोनियट जिम के संचालक है, जायो हैली भरत ने मुझे बोला कि 1 मिनट बाहर आओ, कुछ बात करना है। कहने पर से गुरुद्वारे के सामने रोड के बाहर निकला तो मुझे जोगराज उप्पल साहब मरवाह रोड में खड़े थे, जो हैली भारजपुरी बराई से कहने लगा कि तुमने मेरी शिकायत की है, काफी पैसा खर्च हो गया, 5,000 रुपए दो। तो मैंने कहा कि पैसे नहीं है। दैट इज द एलिगेशन अंडर सेक्शन अंडर 327। तो हैली के खिलाफ आपको क्या कहना है? The learned court below has dealt this aspect, my lord. Yes. Now, what is there, my lord? I live in Hathital colony, my lord. I live with my family, my daughter-in-law, my son. Diagonal to my house is the gym running, my lord. Now, bodybuilders are there, my lord. I made complaint before the municipal corporation. They were annoyed with this. I made a complaint before the CM helpline. They were annoyed with this, my lord. They wanted me to withdraw it, my lord. I couldn't withdraw it. Now, my lord, they stopped me on the road itself, my lord. They recorded the beating, my lord. They beated me, my lord, to the ground. My pagadi was also open, my lord. That is all right, My lord, but 327 ka, my lord. Now I'm coming on that. If my lord, kindly appreciate page number 24 now. yes, 24 of what? Page number 24 of the paper book. My objection. Your objection. Yes. इस डायरी के अवलोकन से प्रकट है कि फरियादी 62 वर्षीय व्यक्ति है और आरोपी गण के द्वारा उसके साथ एक राय होगा षड्यंत्र पूर्वक ढंग से सीएम लाइन में की गई शिकायत को वापस लेने एवं 5,000 रुपए की अवैध मांग करने को लेकर सार्वजनिक स्थापित मालूम। दिस इज वन मालूम। सेकेंडली मालूम में काइंडली एलिगेशन तो एफआईआर नंबर 161 में है। सर मैं बिल्कुल कुछ नहीं बोला जब साहब बोल रहे थे सर। Yes, yes. मेरी ये प्रेयर है मालूम, these persons the main accused मालूम, they are absconding. Police has declared reward against them. Malord, kindly appreciate the video, Malord, they have released. Accused has released the video of my beating, Malord. Then they have released another video saying that yes, we have beaten him, and the reason is that he is making complaint. I filed the transcript of the video, Malord. That only terrorizing people. Entire colony was terrorized like this, Malord. Then they released the video, Malord. Page number 28, you kindly see. इनके कितने रिकॉर्ड्स हैं? But as per the case diary, my lord, there is the Joravar Singh is concerned, but there is no criminal record. No criminal record. Yes. And others? Other also, my lord, is not mentioned in the case diary. No criminal record. Jail. So they may have beaten you, but there is no 327. Malord, that Only to make offences non-bailable, you have alleged 327. that investigation is going on. If the police files in the charge sheet that it is not made out, it will not be made out. Investigation is ongoing. Others are absconding. Yesterday, one accused is arrested in another crime, showing katta to someone. It is there in the newspaper. So who is that? That person's name is. So he is not before court. No. उसकी जब आएगी जब देखेंगे. What I am respectfully submitting, my lord, all these people are criminals, my lord. And these bodybuilders, my There lord, is no criminal case. I asked their criminal antecedent. these applicants may not have criminal past, my lord, associated with hardcore criminals, my lord. Kindly ये अब इनका रिकॉर्ड हो जाएगा. ये नीलेश का कोई रिकॉर्ड है? No, my lord. Applicants has filed first application under section 439 police station offences. Counsel appearing for applicant submitted that applicants has not committed any offence under section 327 of Indian Penal Code. Rest of the offences are bailable in nature. Full stop. FIR has been lost after delay of about 24 hours. Full stop. मुझे क्षमा करेंगे, मैं चूंकि मेडिकल कॉलेज में एडमिट था, देहात नालिश पे हुआ है हमारा। Yes. हमारी ओर से डिले नहीं था मालूम। ये तो इनका सबमिशन। हाँ, बस मैं उसको मैं बोल नहीं पाया था, इसलिए माफी मांग रहा हूँ सर। Yes. मैं समय पे नहीं बोल पाया। 24 hours. Later on, to make the offences grave, allegations were made regarding demand of rupees 5,000. Full stop. Initially, no such allegations were made in the FIR. Considering aforesaid circumstances, applicant be released on bail. Government advocate as well as counsel appearing for objector opposed the application for grant of bail.
it is submitted that applicant was publicly beaten and people in colony in nearby area are terrorized. Applicants are criminals. Considering their act, they may not be released on bail. Heard the counsel for the parties. Full stop. Initially, no allegations of extortion has been made in the FIR. Full stop. Delay of 24 hours has been explained as complainant was in jail. Full stop. In medical hospital. college. Is Medical it correct? Complainant is admitted in Sorry, hospital. the complainant was in hospital and was under treatment. Therefore, there was delay of 24 hours in lodging of FIR. Full stop. Applicant does not have any criminal antecedents. Government has not produced any history sheet of the applicant showing their earlier involvement in any crime. Full stop. Applicants are first time offenders. Considering the fact that no allegation of extortion is made in the FIR and other offences are bailable in nature, application is allowed. Applicants be released on bail. ऑब्जेक्शन का पेज 15 क्या है? हेमरेज का जो रिपोर्ट आई थी मेडिकल कॉलेज से लिमिट से मारा था वो भी हमारे खिलाफ नहीं। और 323 का ही मुकदमा बना है ना। हेलमेट से मारने का भी दूसरे के खिलाफ बताया है। अब मान लो इन लोगों ने इस तरह से मारा सारे बॉडी बिल्डर्स ने कि कोई सीरियस मामला न बने और इनको चोट भी आ जाए, इस तरह से बहुत प्लान था। अब सर आर्गूमेंट के बाद ऑर्डर के बाद बहस कर रहे साहब, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ सर कि वो पूर्व कांग्रेस पार्षद हैं जो इंजर्ड हैं, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस पर्सन है, इसलिए ये सब FIR रजिस्टर्ड हुई, नहीं तो ये भी नहीं होती। कार कहाँ है? अलाउड। उस समय चलिए। तो रिजल्ट नहीं आया। Number 39. We are not saying anything. Arguing council is adjusted my lord today, my lord. Therefore, can't you take it next week, my lord? What? Adjusted है. Adjusted. Yeah. Arguing counsel is adjourned after 1 week. Next week कर दे, मान लो vacation हो जाएगा। Number 40. Next week can't. Next week. List next week. Problem. Number 40. But 60 bulk liter countryman liquor has been arrested. Records. 60 bulk liters. Record है कोई पुराना? नहीं। Applicant has filed first application, police station offences. It is submitted that offence is triable by judicial magistrate first class. Applicant is first time offender with no criminal record. Offence under 34(2) is not made out. Government advocate opposed the application for grant of bail. Heard the counsel for the parties. Considering the nature of offence committed by applicant, application is allowed 50,000. Number 41. The arrest start हो. 56 bulk liter, no case. Allowed, same order. Number 42. Ranjan Banerjee. None appears adjourned 2 weeks. सात वाला भी कर. Same. 43 हो गए. Number 44. जो क्वेश्चन दोगे. Request for passover. Why passovers? Senior counsel is in court number 11. Passover. Number 45. My lord, this is second bail application. First bail application was dismissed and withdrawn 2010-2023, my lord. In fact, my lord, the property or the offences are under section 307, 302, 147, 148, 34, sorry, my lord, and 1061. Eyewitnesses हैं? Yes, man. My lord, if my lord, I would may permit me to read the prosecution story. This would make the case clear, my lord. Page number 6 reads the trial court order, my lord. Yes. फरियादी हरगोबिंद पिता सोएंसो ने थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 7/7/23 को करीब 12 बजे अपने भाई कृपाल के साथ इंगवा वाले खेत पर गया तो देखा उसके परिवार के अंकित राजपूत, दीनदयाल राजपूत, शैलेंद्र राजपूत, these are the 3 persons at the very inception, my lord. अंकित, शैलेंद्र, शैलेंद्र, दीनदयाल, अंकित, yes. उसका खेत जबरदस्ती जुतवा रहे थे
उसके भाई ने मना किया तो ट्रैक्टर बाला चला गया। इसके बाद तीनों लोग उसके घर के पास आए और सो एंड सो गालियां देने लगे जो और बोले कि वह जबरदस्ती उनका खेत जोतेगा। बोले कि जान से मारना है। अंकित ने हाथ में लिए कुल्हाड़ी मारी जो उसके भाई के सिर में लगी, खून निकलने लगा। तभी दीनदयाल राजपूत और शैलन राजपूत ने डंडे से भाई कृपाल की मारपीट करने लगे। अब माय लॉर्ड देन उसके बाद उसी समय अमित राजपूत प्रेजेंट एप्लीकांट वहां आ गया। उसके कहने पर वो कहने लगा कि जान से मारना। उसके भाई को लात घूंसों से मारपीट की। लात घूंसों से मारपीट का एलिगेशन है। डिसीज के सिर्फ 2 इंजरी हैं, एक लेसेरेटेड बाउंड है और एक सिर में चोट है जो कुल्हाड़ी की अंकित ने मारी है। देयर इज नो इंजरी अपार्ट फ्रॉम दिस। Yes, अमित के खिलाफ ये है मतलब दीनदयाल राजपूत शैलेंद्र राजपूत डंडे से मेरे भाई कृपाल को मारपीट करने लगे। उसी समय अमित राजपूत भी वहाँ आ गया और गाली देते हुए कहने लगा, गाली दी है, जान से मारना है मेरे भाई को, लात घूंसों से मारपीट करने लगा। उसकी लात घूंसों से मारपीट करने he was not carrying any weapon. यस मतलब और बाद में बाद भी में आया। पहुंचा। Applicant has filed second application under section 439 police station offences. Counsel appearing for applicant submitted that as per prosecution story, Ankit assaulted deceased Kripal with an axe and Shailendra and Deendayal assaulted with a stick. Full stop. Later on, Amit Rajput also joined them and abused the deceased and assaulted him with hands and fists. Full stop. It is submitted that applicant was not having any common intention with other co-accused persons to murder the deceased. Applicant be given benefit of bail. Government advocate opposed and submitted that applicant also participated in the assault. In these circumstances, application be dismissed. Heard the counsel for the parties. There is dispute over agricultural field between complainant and accused persons. Full stop. At the time of incident, Ankit, Shailendra and Deendayal was armed with weapons. Full stop. Applicant was not armed with any weapons and only allegation of extortion and assault with hands and fists is made against him. Considering aforesaid circumstance, bail application of applicant Amit Rajput is allowed. ओवला इज फाइल। Number 46. So prepared bill application 439 of CRPC, Lordship. First has been dismissed on Lordship 20 June of 23, Lordship. Offense punishable 294, 323, 506, 34 and 302 of IPC, Lordship. लॉर्डशिप ये सडन प्रोवोकेशन का केस था लॉर्डशिप। हमसे हाथ घूंसे से मारने का एलिगेशन था। जो डिसीज है और एप्लीकांट है लॉर्डशिप ये जीजा साले हैं। जीजा हमारे घर आए How थे, he died? सर में चोट की वजह से इनकी डेथ हुई क्या है। लगा है डिसीज को? क्या नाम है उसका? This is good, my lord, Sonu. सोनू। सॉरी क्या चोट लगी है इनको? My lord. Earlier bill has been dismissed on merit, my lord. And there is Order no बताइए। change, my lord. मैं बता देता हूँ। ये लॉर्ड्स पेज नंबर 10 पे है लॉर्डशिप एनेक्चर A2 है। इसमें लॉर्डशिप 5 गवाह हो गए हैं। उसमें 2 वर्जन आए हैं, FIR और जो रिटर्न एप्लीकेशन जो दी थी शिकायत उसमें लात घूंसों से मारने का एलिगेशन था और फिर कोर्ट में वो एविडेंस हुई तो उसमें डंडे से मारने का एलिगेशन बताया। Death was due to cardiorespiratory failure as a result of blunt injury to head and neck. इस पे लॉर्डशिप हमारे पे एलिगेशन है राड से मारने का, मैंने एक्यूज है। जो मान लो जो गवाही की बात कर रहे हैं, कोई फ्रैक्चर है क्या? How many accused are there? लॉर्डशिप 4 एक्यूज है लॉर्डशिप। नाम बताइए। सुरेश, संतोष भाई, रुक्मणी और अमर। सुरेश इज द प्रेजेंट एप्लीकेंट। हमारे इज द मैन एक्यूज लॉर्डशिप। रुकमणी और संतोषी रिलीज ऑन बेल बाय ट्राई कोर्ट, उनसे भी लात घूंसों को मारने का एलिगेशन था लॉर्डशिप। यस, स्टेट। ये जो शर्ट जब्त हुई थी, इनको कोई फ्रैक्चर हुआ है क्या?
There are 8 injuries, my lord. Yes. बताइए. इस वाले पेज. तो कई फ्रैक्चर्स हैं सर में. लॉर्डशिप हमारा सिर्फ इतना है लॉर्डशिप की हाथ घूंसों से मारने के लिए एफआईआर पढ़ लॉर्ड क्या मैं रीड लॉर्डशिप. ये सब लोगों ने मिलके ही मारा है. लॉर्डशिप इसी इसमें ग्राउंड पे लॉर्डशिप मेरिट पे खर्च हुई थी लाठी. इसमें 2 लोगों की ट्रायल कोर्ट से बेल हो गई लेडीजों की लॉर्डशिप. लॉर्डशिप इसमें एफआईआर में ये है लॉर्डशिप अमर ने मेरे लड़के के सिर में राड मार दिया और सुरेश ने हाथ मुक्कों से मारपीट किया जिससे उसको सिर में चोट आई. बीच बचाव करने आए संतोषी बाई रुकमणी ने मेरे साथ हाथ मुक्कों से मारपीट की. अमर इज द मेन एक्यूज्ड. अमर इज द मैन एक्यूज्ड लॉर्डशिप. अरे तो बहुत सारी इंजरी है. लॉर्डशिप 1 साल 3 महीने हो गए हैं लॉर्डशिप. 18 विटनेस है, 5 विटनेस एग्जामिन हुए हैं लॉर्डशिप. Applicant has filed second application under section 439 police station offences. Counsel appearing for applicant submitted that applicant was not armed with any weapon at the time of assault. Full stop. Allegations are made that he assaulted with hands and fists. Full stop. It is further submitted that one Amar was armed with a rod and he assaulted the deceased on his head. Full stop. Applicant is in jail since 9/9/22 for more than 1 year. Who accused in the case, namely संतोष भाई रुकमणी भाई. Santosh and Rukmani, who had similar role as that of applicant, were already released on bail. Government advocate opposed the application for grant of bail. It is submitted that number of fractures were caused to the applicant on his toe and also on his head. Full stop. Said injuries later on proved fatal to him. Applicant was also involved in assault and participates criminals. In these circumstances, he may not be released on bail. Heard the counsel for the parties co-accused, namely Santosh and Rajkumari, has been released on bail. Case of applicant is similar to that of said accused persons. He is in jail since last more than 1 year. Full stop. Applicant was not armed with any dangerous weapon at the time of incident. Considering aforesaid circumstances, application is allowed. Applicant be released on bail. 50,000 to sureties. मतलब उन्होंने जिनकी फेल हुई उनके वाले केस किए नहीं लॉर्डशिप. ट्रायल कोर्ट को एक्यूज की जो ट्रायल कोर्ट से कोई कुछ की वेल ट्रायल कोर्ट से मिली है. ट्रायल कोर्ट से ऑर्डर नहीं हुआ रिकॉर्ड पे. स्टेटमेंट है काउंसिल. Number 47. None appears adjourned. 2 weeks. Number 48. Lord, kindly connect this matter through BC, my lord. My senior will argue this matter. इनके रिकॉर्ड्स हैं. मतलब इन दिस केस लॉर्डशिप 63 लीटर है. एप्लीकेंट नंबर 1 के 28 हैं, एप्लीकेंट नंबर 2 के 32 हैं. बट am I audible to your lordship? Yes, you are audible. It is 34-2 matter. The second bail, your lordship gave us liberty. Your lordship's order is at page 15. Yes. 27 September 2023. Your lordship gave us liberty to repeat the bail application after examination of independent Caesar witnesses.
Yes. They have been examined. We have filed the copies, my lord, at page 17. Hostile? Hostile. My lord, two V1, PW1 and PW3, both are Applicants. independent witnesses, both are hostile. Applicants has filed second application under section 439 police station offences. Learned senior counsel appearing for applicants submitted that earlier bail application was dismissed as withdrawn with liberty to file repeat application after examination of independent Caesar witnesses. Said witnesses has been examined and they are hostile. Applicant will cooperate in trial and will not abscond from law. In these circumstances, applicant be released on bail. पर लिख देना applicants are in jail since 25/8/23. 25/8/23. Government advocate appearing for state opposed the application for grant of bail. It is submitted that कितने केस हैं वन के? वन का 28 क्रिमिनल रिकॉर्ड है और 32 है. 28 criminal case. Applicant number 1 is having 28 criminal cases and number 2 32 registered against them. कब के हैं? सब है लॉर्ड साहब. 18, 19, 20, 21, 22, 23. पुराने हैं सर. They have been decided. The recents are also there. नहीं, 23 का यही है, 22 का एक, Old 23 का एक है. recent यही है सर, पुराने हैं बाकी. Decided है सर. All are decided. All are decided. एक्साइज एक्ट के कितने? एक्साइज का एक है, एनएसए भी लगा हुआ है, 302 भी है लॉर्ड साहब. ये ऑफेंस कब बना है? ये तो अभी का है सर लॉर्ड. अगर एक्साइज का कोई भी नहीं होगा तो with your in view of your lordship's order below 34 will not be made out. इलेक्शन के पहले का है, बाद का है? 25/8/2023 की है. पहले का है. क्या लिखे हैं? Registered against them, they are habitual offenders and therefore they may not be released on bail. Heard the counsel for the parties, independent Caesar witnesses has been examined and they are hostile. Full stop. It cannot be said that applicants were in possession of illicit liquor. Full stop. Applicants are in jail since last in jail since 25/8/23. Investigation is complete and charge sheet has been filed. Considering aforesaid circumstances, application is allowed on following conditions. Appearance before local police station twice in month. If applicant found involved in any other offense. बाकी लगा दो. 7(3). डायरी नहीं. ये 1 lakh 2. सर मटेरियल में Diary is not there. हाँ डायरी नहीं. Next week. He is hostile. सर सब मटेरियल मदर फादर फाइल किए आप? आपने सब पेश किए सर. Yes, state. काइंडली सीधा अनेक्जर A3 में सर पेज नंबर 1 मनीष मदर इज हैज बीन होस्टाइल. नंबर 2 पेज नंबर 2 अगस्तिया सकेत होस्टाइल. नंबर 3 कुमारी क्षमा कजन सिस्टर आल्सो होस्टाइल. रामकली सकेत इज रिलेटिव होस्टाइल. इज डॉक्टर इज नॉट सपोर्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन स्टोरी पेज नंबर
Applicant has filed repeat application under section 439. Earlier application was dismissed. क्या है? Want of prosecution है क्या है? नहीं नहीं मतलब बस लिबर्टी लिबर्टी Earlier application was dismissed as withdrawn with liberty to file repeat application after examination of material witness. पेरेंट्स का It is submitted that material witness that are parents of deceased has been examined and they are hostile before court. In these circumstances, applicant who is husband of deceased be released on bail. Government advocate opposed the application for grant of bail. It is submitted that parents are not totally hostile. पूरे hostile declare हुए हैं? डिक्लेयर नहीं है मतलब That कोर्ट नहीं किया। parents of deceased were not declared hostile. Full stop. There are allegations of demand of dowry and harassment. Applicant is husband. In these circumstances, he may not be released on bail. Heard the counsel for the parties. Applicant is in jail since 22/7/23. Investigation is complete and charge sheet has been filed. Material witnesses has also been examined and there is no chances that applicant will be able to tamper with evidence of the case. Considering aforesaid circumstances, application is allowed. 50,000 one surety. number 52. Tamper with evidence or influence witness. वालेट आइटम नंबर 47 था, दूसरी कोर्ट में था, निकल गया है। Yes. अभी कौन सा कॉल हुआ? 52. Yes. Lord, I am praying for password. Teenage bri code number 11. 11 में क्या हो रहा? पहले भी 11 में हुआ था। Sir, hearing is the second number. 500. Number 53. This is the third will application, my lord. Yes. Option 304B of the IPC. I am claiming only delay in trial, my lord. Not a single witness has been examined before the trial court, lord. Report was called. So I have filed the order sheet, my lord. In the last order sheet 12/10/23, lord. स्टेटस बोले सर लगभग 1 साल हो गया सर, सास है और मेन एलिगेशन हस्बैंड के ऊपर है कि वो सोने की चेन और परेशान करता था। इसके ऊपर ये है कि अभी एक भी विटनेस नहीं हुआ। एक भी सिंगल विटनेस नहीं। कहाँ है ऑर्डर शीट्स? लॉर्ड सर पेज नंबर 31 लॉर्ड सर, लास्ट ऑर्डर शीट। पेज नंबर 31 लॉर्ड सर, लास्ट ऑर्डर शीट। सभी को समन्स जा रहे हैं, वारंट भी जा रहे हैं, हमारे पर कोई भी नहीं आया लॉर्ड सर। सर हमारी कस्टडी 23/12/23 से लॉर्ड सर, लगभग 1 साल। 23/12/22 में 1 साल हो गया लगभग। ये आपके वहाँ स्ट्राइक चल रही थी क्या? नहीं लॉर्ड सर, ये कई बार तो आ रहे हैं कि ऑर्डर शीट में काम से विरक्त रहने के कारण बढ़ाया गया आरोप पे 27/2, फिर 27/13/3, फिर आरोप तर्क हेतु ही चल रहा है। चार्जेस कब फ्रेम हुए? लॉर्ड सर ट्रायल प्रोग्राम तो और ये है 6/6/2023 आरोप तर्क हेतु नियत 6/6/23 को हुआ है। नहीं, अभी तो आरोप तर्क ही चल रहे हैं। आरोप कब लगे? ये इसके बाद भाई प्रोसिक्यूशन का रोल तो जब ही आएगा ना जब चार्जेस फ्रेम हो जाएंगे एविडेंस के लिए। आरोप विचलित किए गए 6/6/2023 में आरोप 6/6/23 में लगे हैं। 6/6/23 और 6/6/23 के बाद 20/6/23 में इसके बाद की ऑर्डर शीट बताइए कहाँ है? पेज नंबर 26 20/6/23 लॉर्ड सर और फिर 4/7/23 लॉर्ड सर कंटिन्यू ऑर्डर शीट्स में लॉर्ड जो भी डेट लगी है लॉर्ड सर 17/7 31/7 सभी में लॉर्ड सर सभी को समन्स हो रहे हैं लॉर्ड सर।
लास्ट तक। फिर कोई ज्यादा डिले नहीं हुआ है। 12/10/23 तक की लॉर्डशिप, 1 साल हो गया लॉर्डशिप। एलिगेशन इसके ऊपर केवल एक ही परेशान करते थे ये मतलब 6/6/23 से तो शुरू हुआ है ट्रायल आपका। समन से बुलाया है 20/6 को। 1 साल हो गया सर कस्टडी भी सर। महिला लॉर्डशिप को एक्यूज लॉर्डशिप, इसमें नन की बेल हुई है लॉर्डशिप। साक्षी अनुपस्थित 4 साल। बारह दस दस तक की ऑर्डर शीट है लॉर्डशिप, 2 महीने और हो गए शायद इस 2 महीने में। ये तो पर एक भी विटनेस एग्जामिन नहीं हुआ। सभी जेल में उसमें स्पष्टीकरण भी लॉर्डशिप, ये साक्षीगण सभी को अनुपस्थित। सर शुरू से वो समन्स निकले फ्रॉम द डेट ऑफ द फ्रेम ऑफ द चार्ज मान लो। 1 साल हो गया लॉर्ड। जारी आदेश का तामील अदम तामील वापस प्राप्त नहीं। ये सब अनुपस्थिति चल रहे हैं। कितने विटनेस हुए हैं? एक भी नहीं हुआ। एक भी नहीं हुआ सर। क्या लिखा है? Third application. Under section 439, police station offences. Counsel appearing for applicant submitted that there is delay in trial by prosecution. In these circumstances, applicant be released on bail. Applicant is a woman aged about 61 years. Government advocate opposed the application. It is submitted that charges were framed on 6/6/23. Full stop. Considering the period of offense, considering period of custody, it cannot be said that there is long delay in trial. In these circumstances, considering seriousness, offense committed by applicant is serious in nature, therefore he may not be released on bail. Heard the counsel for the parties, charges has been framed on 6/6/23. After framing of charge, not even a single witness has been examined. Summons are being issued repeatedly, but none of the witnesses are appearing in the case. Applicant is a woman aged about 61 years and she is in jail since 23/12/22 for about 1 year. Considering aforesaid circumstance, application is allowed. Applicant be released on bail. 50,000 trial court. Number 54. Liberty was granted. Yes. Examination of the complainant, my lord. My lord, she has been examined, my lord. I just pass on the statement. हॉस्टाइल है। हॉस्टाइल नहीं क्या है? ये 5वीं एफआईआर है मेरे खिलाफ इसी लड़की के द्वारा सर। पहले इसने 354 की पहले लिखाई क्योंकि द रीजन इसकी मैंने इसकी बड़ी बहन से शादी करी। फिर 363 की लिखाई मेरी वो खत्म हो गया क्योंकि उसने बोला कि नहीं मैंने मर्जी से शादी
आज तक नहीं पकड़ा गया, ना सीजर हुआ ना कुछ है, मतलब सिर्फ मेमोरेंडम। Applicants has filed third application under section 439 police station offences. Counsel appearing for applicants submitted that applicants are in jail for more than 1 year. Offence is triable by judicial सीसीटीवी फुटेज के magistrate आधार first पे इनको class. पकड़ा गया, सीसीटीवी फुटेज में आए थे ये, तभी पकड़े गए। तो आप तो बोल रहे हैं कुछ भी सर evidence उसको नहीं है। आइडेंटिफाई किसने किया सर? कंप्लेनेंट ने आइडेंटिफाई नहीं किया सर, वो चारों अक्यूज से आइडेंटिफाई करा है। इट्स एज गुड एज अ मेमोरेंडम। फुटेज कंप्लेनेंट के घर में लगे थे और उसके आधार पे वो बताया। सर मैं एक मिनट, किसने पहचाना है इनको? किसने पहचाना? हाँ, आइडेंटिफिकेशन नहीं, वो फुटेज के आधार पे ये पकड़े गए हैं। यही दिख रहे हैं ना उसमें? हाँ, यही दिख सर और कौन क्या बता रहा है identification सर? सर चाहिए? कौन बता रहा है सर? ये कंप्लेनेंट ने आइडेंटिफाई नहीं किया सर, उसके घर का सीसीटीवी था, उससे कंप्लेनेंट ना भी करे, पुलिस वाला भी देख ले कि चोरी पुलिस करते वालों हुए ने आप सर दिख ये रहे हैं। खुद अक्यूज को ही बना रहे हैं सर पहचान करता। सर दिस इज एज गुड एज अ मेमोरेंडम सर। ये खुद ही 71 पेज पे सर लगा हुआ है, मैंने अपने एप्लीकेशन के साथ ही फाइल किया सर। इनको पहचाना किसने है देख के सीसीटीवी फुटेज में कि ये लोग वही हैं खुद जो ही उसमें accused दिख नहीं रहे हैं? पहचाना। नहीं, ये आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ है। नहीं हुआ है नहीं हुआ है। तो फिर तो क्या कुछ एविडेंस नहीं है? क्या लिखा हुआ? ऑफेंसेस आर ट्रायबल बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। और उससे पहले क्या लिखा? Offences are triable by judicial magistrate first class, though there are criminal antecedents against the applicant, but all the said offences are registered on the same day. In these circumstances, applicants be released on bail. Government advocate opposed the application for grant of bail. It is submitted that as many as 25 or more cases are registered against each of the applicants. They are having criminal antecedents and are earning living by leading a criminal life. If applicants are released on bail, then they will again indulge in similar offences and they will be threat to property of other persons in society. In these circumstances, applicant may not be released on bail. Heard the counsel for the parties. Number of cases has been registered against the applicant, but said offences were registered on same day. State सेम डे नहीं है मैलॉर्ड, वो जो अलग अलग थानों में रजिस्टर्ड थे केस चोरी के पहले से, उन्होंने अपने उसी को मेमोरेंडम में कायमी बताया। कर दी ना आपने, एक ही हाँ, दिन में कायमी कर दी। were registered on the same day. Full stop. Applicants except CCTV footage which is available with the police, no other evidence is available against the applicant. In identification of applicants in CCTV footage was made by accused themselves. Therefore, accused may not be forced to give incriminating evidence against himself. Therefore, said CCTV footage in absence of identification of applicants by any other independent witness or complainant cannot be believed. क्या लिखा है? Cannot be believed. Considering aforesaid circumstances, application filed by applicants are allowed on following condition: appearance before police station twice 1 month, will not involve in any other offence. 437(3) will appear before trial court. Much obliged. Bill number 57. 1 lakh each, 1 surety. 7 jail. Much एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 439, इसमें लॉर्डशिप ने आदेश किया था कि कंप्लेनेंट के स्टेटमेंट हो जाएं। कंप्लेनेंट के भी हो गए, आई विटनेस के भी हो गए लॉर्डशिप। प्रीवियसली ये इसलिए कब से हैं आप जेल में? 17/1/2023 से। 17/1/23 से जी। दे आर होस्टाइल? नो सर, होस्टाइल नहीं, लेकिन सर मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। व्हाट आर इंजरीज? इंजरी लेफ्ट थाई पर है, लेकिन हमारे द्वारा नहीं है लॉर्डशिप, हमारे द्वारा ये आरोप। लेफ्ट थाई? लेफ्ट थाई विद व्हाट? फायर नाइफ है क्या है? फायर फायर आर्म जिसने गनशॉट चलाया है। आपको ऑब्जेक्शन? बुलेट में बैठे थे आगे,
और जिसने फायर आर्म चलाया वो पीछे बैठा था। एप्लीकेंट जो है वो बुलेट चला रहा। चोट किसको, आगे वाले को लगी, कंप्लेनेंट को? नहीं नहीं नहीं, ये 2 बुलेट में थे, सामने दुकान में मारा। तीसरे आदमी को मारा? हाँ, तीसरे आदमी को मारा है। जानू चांदवानी को। यस, applicant has filed लॉर्डशिप ये जेल में third application. Yes, जेल में बैठ के ये प्लान कर रहे हैं लॉर्डशिप, हमारे खिलाफ हनुमान ताल थाने में एक मुकदमा दर्ज करा दी है लॉर्डशिप, की चार्जशीट फाइल होने वाली लॉर्डशिप नेक्स्ट वीक में। लॉर्डशिप में फाइल कर देते हैं। लॉर्डशिप हम जेल में हैं। इनका कितना रिकॉर्ड है? कोई रिकॉर्ड नहीं है। 2018 में 324 का रिकॉर्ड था, उसमें भी इसी तरीके से हमको एक मात्र है, सिर्फ एक ही रिकॉर्ड है ना? जी लॉर्ड। Applicant has filed third application under section 439. के हमारे खिलाफ है कि हम इस इनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, इतने बड़े गैंगस्टर नहीं है कि ये जेल के अंदर से प्लान करें। 324 का एक फॉल्स एलिगेशन इन्हीं के द्वारा बनाया गया है। क्या लिखा है? Third application under section 439 police station offences. Counsel for the applicant submitted that no offence under section 307 is made out against the applicant, though injury was caused by firearm, but it was not क्या लिखा है? But it was not targeted on any vital part of the body or organ. It was below the belt on thighs. Left thigh. In these circumstances, applicant be released on bail. Government advocate appearing for state opposed the application for grant of bail. It is submitted that firearm has been used and applicant is having one criminal antecedent. In these circumstances, applicant may not be released on bail. Heard the counsel for the parties. Applicant is in jail since 17/1/23. Investigation is complete. Charge sheet has been filed. No fatal injury has been caused to the deceased and injury was on his thigh with a firearm. Full stop. Considering the period of custody and injury which has been caused by the applicant, application is allowed. Applicant be released on bail. 50,000 trial court. Bill number 58. Justice Party. बिलाट ये जो है 58 लिंक विद 62 जी ना बिलाट ये जो है मर्सी ग्राउंड पर लगा मर्सी है लॉर्डशिप, हैड टू माउथ कंडीशन लोगों को 8 महीने जेल में है और मैक्सिमम केसेस हैज बीन डिसाइडेड कोई कुछ हमें रिलीज आज बिलाट ये कितना डैमेज है प्रॉपर्टी को? थाने पे हमला वाला है सर, मॉब वाला है नेपान अग्रवाल। 8 महीने हो गए। 8 महीने हो गए बट मतलब earlier कुछ नहीं पता। Yes. Earlier bail application decided on 22nd of August 23 and liberty was granted period of after period of the 6 month. Month is not fast in today. कोई 6 month or 3 month आती है this court has maximum cases have decided। नहीं तो आपके तो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं इसलिए 6 महीने आपने 6 महीने इनके भी थे लाटती तो चूंकि मर्सी ग्राउंड पे आपने दिया कि 8 महीने जेल में है। देयर इज एन ऑर्डर और लाटती ये लाटती ऑर्डर को कैसे ओवरकम करेंगे आप? प्रीमेच्योर एप्लीकेशन इसमें भी थे लाटती तो लोग चूंकि मर्सी ग्राउंड पे दिया था और भाई आपने क्या मर्सी ग्राउंड पुलिस स्टेशन पे आपने मैं बता देता हूँ आपके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं साहब पहचान नहीं हुआ जब सीसीटीवी फुटेज पहचान नहीं हुआ और जो गवाही हुई है अभी एक ही गवाही हुई है उसमें भी नहीं पहचाना है और एक ही गवाही हुई है बाकी गवाही अभी हुई नहीं लाटती इनका पूरा करार भी नहीं हुआ लाटती इस आधार पे आपसे ये पुराना ऑर्डर कहाँ है? आपकी खारिजी का ऑर्डर कहाँ है? सर एनेक्सर जी लाटती A2 पेज नंबर 16 मैं बता देता हूँ उसमें कुछ हुई थी लाटती तो उनकी आपने दी थी सर जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था और जिनकी एज 19 ईयर्स वो तो बहुत पहले आपने जुलाई में वो ये बाद वालों को सबको 6 महीने बाद ही सर आपने सबको लिबर्टी अक्टूबर में लाटती आपने सबको दे दिया था और इसमें भी लाटती पेज नंबर 24 में है 24-25 में जिनको दिया था जिनके 2 क्रिमिनल रिकॉर्ड थे इनके 4 क्रिमिनल रिकॉर्ड थे और मैं मर्सी पे दिया था कि 9वां महीना है लाटसी जेल में है और कापी भी मैंने पेश किया लाटसी की पूरी गवाही नहीं हुई जो गवाही हुई तो पहचाने नहीं हुआ और सीसीटीवी फुटेज में भी नहीं पहचाना पेज नंबर 22 में आया लाटसी आपका ऑर्डर है अनग्रहित लाटसी 30 अक्टूबर को
लिबर्टी कहाँ है? सर एमसीआर पैरा नंबर पेज नंबर 25 सबसे लास्ट में देखा 12 लास्ट सबसे लास्ट में दी है एप्लीकेंट नंबर 12 नंबर 1 to 3 गणेश सुनील एप्लीकेंट नंबर 5 to 9 so and so नंबर 13 16 दीपक हजारी एंड रविश्वर लेखराम एट लिबर्टी टू फाइल हुई थी पेज नंबर 12 में लिबर्टी दी थी लास्ट एप्लीकेंट नंबर रिपीट बेल एप्लीकेशन आफ्टर पीरियड ऑफ 6 months if trial not conclude 5 लोगों को कि जो दिया था 6 मंथ लास्ट लास्ट एक ही गवाही हुई अभी तक आफ्टर 6 months बोला। हाँ, yes, yes. 6 months होने दीजिए। तो लास्ट अक्टूबर लास्ट एडजॉर्न कर दे लास्ट 6 महीने बाद आफ्टर वैकेट 8 कब का ये ऑर्डर? सर अक्टूबर का अक्टूबर का लास्ट ये है 30th of October 23 का ऑर्डर है। अदर कोई फिर छूट गया लास्ट इसलिए लगाया है और वो आपके तो रिपीट ऑफेंडर सर यदि लिबर्टी नहीं होती तो वैसे भी ये क्लेम कर सकते रेपेरिटी और अगर लिबर्टी है तो सर कोर्ट का ऑर्डर है वो तो उसको कंप्लाई करना चाहिए। बात ठीक है लॉर्डशिप, इसमें ये है कि पुलिस वालों ने जितने 7 क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाए सब पे बना दिए। ये तो केवल झगड़ा हो रहा था देख रहे थे। जितने लोग 87-88 लोग हैं सबकी हैंड टू माउथ कंडीशन है। कोई ऐसा नहीं है कि उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड जो पुराने केसेस थे सब में 7 केसों में सबको इन्वॉल्व कर दिया और कोई एक पुलिस वाले को चोट नहीं है। सब कोई ग्रीवियस इंजरी नहीं है 307 की, बता दें अगर कोई ग्रीवियस इंजरी हो आपने दिया भी था और कोर्ट ने इसमें ऑर्डर में मेंशन भी किया है कि अगर ग्रीवियस इंजरी है 307 की तो ये बता दे। 30 तारीख को आपने लिबर्टी 8-9 महीने हो गए सब जेल में रहते हैं। 2011 गवाही हो गई तब दे आर इन जेल फॉर 9 months। जी लास्ट अजय मालवी है उसको सर फ्रैक्चर है अल्ला में लेफ्ट देख लें सिंपल इन नेचर है ऑर्डर में दिखाना। पर 307 फिर भी नहीं है 26 6 महीने से ऊपर हो गया जेल में। 8 Applicant has filed repeat application for grant of bail. It is submitted that applicants are in jail since last 8 months. Earlier application was dismissed with liberty to file repeat application if trial is not concluded within period of 6 months. It is submitted that only 2 witnesses has been examined, considering the fact that other co-accused persons has been enlarged on bail. Therefore, applicant may also be given the same benefit on grounds of parity. Government advocate opposed the application for grant of bail. It is submitted that applicant is having criminal records. They have attacked at police station. Offence is serious in nature. In these circumstances, they may not be enlarged on bail. Heard the counsel for the parties. Applicant are in jail since last more than 8 months. Full stop. Earlier applications was considered as they had attacked the police station. Since progress in trial is slow and only 2 witnesses are examined and also taking into consideration period of custody, application is allowed with following conditions डाल देना will appear before police station 62 and 62.1 also same. Yes, 62 और 62.1 same order. over number 59 My lord, this is third bail application, my lord. And second bail was dismissed after with liberty to after examination of witness Hemraj. But since last 7 months, he has not been examined and not appearing before the court, my lord. Even issuance of 10 साल बाद गिरफ्तार हुए। ये सर ये तो जेल में था, गिरफ्तार होने की बात ही नहीं है। ये जिस समय की घटना बता रहे हैं वो जेल में था, इम्प्यूग्ड ऑर्डर में आया हुआ है। मतलब उसको देखने का पेज नंबर 10 हमारा है, इम्प्यूग्ड ऑर्डर है, उसमें दिया हुआ है प्रोटेक्शन वारंट में आया और जिस समय की घटना बता रहे हैं उस समय भी ये जेल में था और को एक्यूज की बेल हो गई है सर। इसमें जो 3 विटनेस हुए हैं वो हॉस्टाइल हो गए हैं, उसका ऑर्डर मैंने लगाया हुआ और ये 1 साल से ज़्यादा है सर। ये पेज नंबर 44 को एक्यूज का ऑर्डर। कब से हैं आप जेल में? सर 2/12 से हैं सर, 2/12/22 से और कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है ना कोई सीजर। किसका रिकॉर्ड, किसकी बेल हुई है? ये सर को एक्यूज 5 क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं, 44 पेज नंबर 44 दुकान के 5 हैं, 5 रिकॉर्ड है। 5 रिकॉर्ड सर। ये जिस समय की घटना बता रहे हैं उस समय ये जेल में था, इम्प्यूग्ड ऑर्डर में आया हुआ है और 3 विटनेस है जो एग्जामिन हुए हैं वो हॉस्टाइल हो गए।
He was successful in loot या सिर्फ प्लानिंग ही है? कुछ नहीं है सर, सीजर भी कुछ नहीं है इन पे। ये स्टेट क्या एलिगेशन है? माय लॉर्ड, ये पुलिस की मुठभेड़ हुई थी इनसे। ये तो पुरानी कहानी बता रहे हैं, वो पुरानी जो एफआईआर में है सर, वो ये उससे अलग बता रहे हैं। ये प्रेजेंट केस का जो है एफआईआर उसमें खाली ये है कि साथ में जाके इनने चिट्ठी देने किसी दूसरे आदमी को दिया, उसने चिट्ठी फेंक दी सामने वाले। दिया जाने के लिए कि इतने पैसे चाहिए, नहीं तो बाकी और कुछ नहीं, ये इसके धमकी अलावा दिया था। और जिसको धमकी दी है उसके भी एग्जामिनेशन हो गए हैं और वो हॉस्टाइल हो गया है। मैंने उसमें लगाया हुआ है सर PW2, PW3 और PW4। जिसको धमकी दी है वो भी हॉस्टाइल हो गया, उसका मैनेजर और जो सरपंच है वहाँ का विलेज का, वो भी हॉस्टाइल हो गया। Applicant has filed repeat application under section 439 police station offences. Counsel appearing for applicant submitted that applicant is in jail since 2/12/22 for more than 1 year. Some of the material witnesses has been examined and they are hostile. Considering aforesaid circumstance, applicant be released on bail. Government advocate appearing for state oppose the application for grant of bail. It is submitted that applicant is having criminal antecedents and 5 cases are registered against him. Offence is serious in nature. In these circumstances, applicant may not be released on bail. Heard the counsel for the parties who accused in the case one. आपका केस सिमिलर है? जी सर। छोटू alias Pintu Cole has been released on bail in MCRC number 53624 of 23 by order dated 5/12/23. Case of applicant is also on parity. Applicant is in jail since last more than 1 year and some of the material witnesses has been examined and they are hostile. Considering aforesaid circumstances, application is allowed 50,000. Condition will appear before police station, first of everyone. Bill number 60. This is a repeat bail application. There are 4 accused persons, the matter is of 3021. Now, the girls, the ladies who have caused injury by danda and stick, are also pleased to grant bail, but observe that this will not create a panic with the other accused persons. Yes. Now, the main eyewitness, Manohar Lal, Mohan and Santosh, and 164 they stated, but here they have denied that we did not identify the present applicant. The allegation against the present applicant, there is a seizure of motorcycle. जिससे disease पवन को मैं लेके गया. How many eyewitnesses are there? 2 eyewitnesses हैं, मतलब राजकुमार और ताजवर खान। ये दोनों एग्जामिन हो गए? ये ताजवर खान तो हालांकि लास्ट सीन है, राजकुमार है आई विटनेस। हाँ, आई विटनेस है राजकुमार और ये लास्ट सीन है ताजवर खान। और लास्ट सीन के जो 164 के भी कथन हुए हैं इनके, मनमोहन के और जितेंद्र के। और सीताराम ओरल डीडी है सीताराम का, इसको डिसीज ने बताया था, यही अस्पताल ले गया था। 101 का ये इसकी ड्यूटी थी, 100 डायल में हॉस्पिटल ले गया था, इसको डिसीज ने बताया था। ये इनको आपके पहले वाले ऑर्डर में भी आया है। किसने? एप्लीकेंट ने मारा है? नहीं, आपने ये बोला था कि ये मनमोहन राजकुमार सब हो गए हैं, मटेरियल विटनेस ऑलरेडी एग्जामिन हो गए, बट सीताराम जो पुलिस वाला 100 डायल का लेके गया था उसकी भी स्टेटमेंट होता, दैट वाज द लिबर्टी व्हिच वाज कंसीडर्ड, दैट इज दिस इज द चेंज सर्कमस्टेंस व्हिच यू हैव मेंशनड। ही हैज बीन एग्जामिन्ड। हां, ही हैज बीन। हॉस्टाइल है? होस्ट पुलिस वाला है सर, वो तो नहीं हॉस्टाइल नहीं उसने, लेकिन उसने यही बोला तो 302 रही है अंदर और क्या? नहीं, हमने सिर्फ इतना ही बोला था मैच में मारने का, लेकिन लेडीज जिन पे था उनको दे दी 1 साल से। हाँ ठीक है, उनका तो लेडीज था इसलिए दे दी। लेडीज के कारण उनको दी 14 आपने इसी ग्राउंड पे दिया था कि लेडीज, बट मारा उन्हीं ने है। कस्टडी पीरियड 29/5/22 से है, उनको उसी समय इमीडिएटली हो गई थी। 14 विटनेस हो गए हैं सर। हाउ मेनी आर रिमेनिंग? ऑलमोस्ट 20 हैं। जो आई विटनेस है वो भी हॉस्टाइल नहीं है। हॉस्टाइल तो खत्म ही होने वाली है ट्रायल। हाँ, इधर माइलॉर्ड ओपिनियन। Applicant has filed repeat application. Earlier application was dismissed on merits. No change in circumstances. Dismissed. माइलॉर्ड ओपिनियन की खत्म होना, माइलॉर्ड में ऑब्जर्व की एक्सपीडिएट ट्रायल की। Trial court is directed to expedite the trial and preferably complete it within further period of 6 months. I am grateful. Now, the 60.1. ये भी सेम ही। सेम।
Number 61. Allowed to repeat application. Earlier there is liberty to file after the statement of witnesses. Statement हो गए my lord इसमें. Yes. Witnesses के और सभी negative हमारे against हैं my lord. Complainant कौन है? Complainant is विशाल सिंह PW3. Hostile है? नहीं my lord, hostile कुछ पार्ट में hostile है और कुछ पार्ट में जो है उन्होंने बोला है कोर्ट में, है ना my lord. और ये 14/10/2022 से जेल में है और अभी 15 विटनेसेस हैं my lord इसमें. ये फैमिली इनमिटी का मैटर है my lord. इसमें 2005 में एक स्टेटमेंट दिया था हमने, उसके बाद से जो है इनने लगभग जो है 17 केसेस दर्ज कराए. उसके क्या कहते हैं वो 107/16 और उसके 11 केसेस जो है आरपीसी के हैं और 6 इज इन जेल सिंस लास्ट 1 ईयर. काफी टाइम रह भी लिया. गवाहों ने सबने सपोर्ट किया है. ठीक है, 15 सजा विटनेसेस और पड़ेगी. अब कितने दिन रखेंगे इनको? 15 विटनेस और बचे हैं अभी. 6 महीने तो पकड़ डेट ऑफ मैसेज 6 महीने पकड़. उसके बाद जब इनके लड़कों फिर ठीक है, 1 साल हो गया. Applicant has filed fourth application under section 439 police station offences. Counsel appearing for applicant submitted that applicant is in jail since 14/10/22. Some of the material witnesses has been examined. कोई रिकॉर्ड्स हैं इनके? 17 हैं जिसमें 6 आईपीसी के हैं और 11 सीआरपीसी के. एक साथ वो 2008 के बाद कोई केस नहीं है. 2008 के बाद जितने भी मैटर हैं सब इनमिटी के. इसमें और कौन सा मटेरियल विटनेस बच गए? कोई नहीं हमारे, तीनों हो गए हमारे. तीनों हो गए. क्या लिखा? Material witnesses in the case has been examined and now there is no chances that applicant will be able to influence the witnesses. In these circumstances, he may be enlarged on bail. Government advocate as well as counsel appearing for objector oppose the application for grant of bail. It is submitted that applicant had committed an offence which is punishable up to life imprisonment and is heinous in nature. In these circumstances, applicant may not be released on bail. Heard the counsel for the parties. Applicant is in jail since last more than 1 year. Material witness in the case has already been examined. There is no chances to influence said witnesses. In these there is no chances that applicant will be able to influence the witnesses now. In these circumstances, application is allowed. In these circumstances, and taking into consideration period of custody. Number 63. Nice. Conditions. This is the a record as 70 conditions. हफ्ते में 2 दिन, महीने में 2 दिन. Yes. Malad, this is fourth bail application. 2 bail application have been dismissed on merit, Malad. The last that was dismissed on merit was 8/7. This is fourth. कब से हैं आप जेल में? 8/7/2021. The co-accused person have been released on bail by this honorable court. One order is at page number 30. आपको क्यों नहीं मिली? Malad, the criminal records. No, we are on the same footing. Yes. But first, while deciding my first application, my lord, by my lord, it was observed that since there was an identification by the complainant, therefore the bail has been denied. ये स्टेट 2 साल हो गए. जी. कितना रिकॉर्ड है इनका? कोई रिकॉर्ड नहीं है. These are the 2 orders that has been, and another is one more aspect, my lord, may kindly appreciate. A joint application was filed by the applicant with a co-accused person for production of a call record and tower location of the applicant, my lord. That was allowed by the trial court. ये तो इनका टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड वाले का भी हो गया है. जी. अविनाश मौर्य. जी. आपका भी सेम है. जी. ये स्टेट बुद्धराम गुर्जर का भी हो गया है जो A5 है. My lord have dealt ये with. क्या? He has also been identified. Yes, all persons have been identified. सभी को टीआईपी में पहचाना था मलट, लेकिन डायरेक्शन था इनका स्किल बाद 3 लोगों की
उसमें 2 पेंड साल से हो गया है. Applicant has filed fourth application under section 439 police station offences. Counsel appearing for applicant submitted that applicant is in jail since 8/7/21. 7/8. 7/8. Is in jail since 7/8/21. Trial is likely to take some more time considering the long period of custody and fact that other co-accused person, namely Dharmendra Kumar and Avinash Maurya in MCRC number 51699 of 23 and 52345 of 23 wide order dated 22/11/23 and 1/12/23 were released on bail. On grounds of parity, applicant may be given benefit of bail. Government advocate opposed the application and submitted that offence committed by applicant is heinous in nature. Earlier applications were dismissed on merits. Heard the counsel for the parties. Applicant is in jail since last more than 2 years. Co-accused were released on bail. And case of applicant is on parity with other co-accused person. Considering aforesaid circumstance, application is allowed. Applicant does not have any criminal antecedent. First time offense. Allowed. लोकल सेफ्टी मतलब Yes. लोकल सेफ्टी कर मतलब कहाँ के हैं ये? My lord, may kindly appreciate NHA A5. Yes. That was the first bail application of Budharaj. Yes. In that, my lord have आप कहाँ के रहने वाले हैं? Applicant is from Jhansi. झांसी तो आप लोकल श्योरिटी दे दी थी, क्या दिक्कत है? That condition has been imposed by my lord in NHA A5. That's what I am pointing out. Local श्योरिटी. Obliged. Number 54, political party. CD not available first time list. Case diary called after 1 week. Number 55. आइडिया रिपोर्ट काल की थी आपसे कि ये दोनों साथ में रहते कि नहीं, तो उसमें आ गया है मतलब ये जो सास है मतलब आवेदिका किस्मतिया और किस्मती साहू, छोटेलाल साहू और शुक्ला साहू, हमें जानकारी चाहिए गई। किस्मतिया साहू अपने लड़का द्वारका साहू और बहू बीना साहू के साथ संयुक्त परिवार में एक ही घर में रहते, साथ में ही रहते। Let's assume, sir. Incident is said to have taken place at 3. So why false averment? No. हम लोग अलग रहते हैं। सर उसको तो पहले वेरीफाई हुआ था, वो वेरीफाई हुआ तो मैंने डॉक्यूमेंट भी, एक और डॉक्यूमेंट इस घटना के पहले का भी लगाया। आपने डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट भी फाइल किए होंगे सरपंच की? नहीं सरपंच नहीं सर, वो लगाया हुआ है। क्या लगाया आपने? देखें सर डॉक्यूमेंट, काइंडली कम डाउन टू डॉक्यूमेंट व्हिच इज देयर सर, पेज नंबर 21। समग्र पोर्टल में भी इनका अलग एड्रेस डाला हुआ है। कब का है ये? ये पहले का सर, घटना के पहले का। ये तो आप राशन के लिए डाल देते हैं अलग एड्रेस। अब घटना, लेट्स अस्यूम फॉर द सेक ऑफ, लेट्स टेक व्हाट द प्रोसिक्यूशन केस। Yes. The prosecution case is that deceased and her husband, after having food, went to their respective rooms. Yes. At 3:30, it is said, as per the case of prosecution, they say at 3:30 in the morning, the deceased died. Yes. The intimation and other things were done. Body was sent to the body. The deceased was taken to the hospital. What is date of marriage? My lord, marriage according to them 18/5/19 16/5/19. 18/5. And death is? Death has taken place, my lords, on 27/5/23. और प्रोसिक्यूशन अनुसार क्या कहीं डायरेक्ट एलिगेशंस हैं? इसमें जो इनका ये था कि ये जहर खा के खत्म हो गई, तो फैसल रिपोर्ट भी जो है बिस्तर नहीं आया उसमें, और स्ट्रैंगुलेशन आया इसमें जो गला दबा के मारने का है। वो पति के खिलाफ एलिगेशन है, और उन्हें उनके घटना स्थल के इनके ही डॉक्यूमेंट में दर्शाते हैं। इनके मृतिका बीना साहू का कमरा उधर पे बोलते हैं कहाँ घटना घटी, वेयर शी वाज लिविंग विद हर अगर हस्बैंड। स्ट्रैंगुलेशन है तो आपने 302 क्यों नहीं बनाया? बाद में रजिस्टर किया सर, किया है बाद में 3, बट दैट इज अगेंस्ट द हस्बैंड, नॉट अगेंस्ट हिज मदर इन लॉ। यस, इनके अगेंस्ट है डिमांड ऑफ डाउरी एंड है, हैरासमेंट। मालट बराबर सभी के ऊपर है। मैं पढ़ देता हूँ इसमें 18/5/19 नाउ इट इज टू अर्ली, अभी आप 10 से ही जेल में हैं। नहीं, मैं एलिगेशंस आर आल्सो देयर सर। देयर 2 स्मॉल चिल्ड्रन, वन इज काना 3 years and 6 months, दिव्यांग। ये आपके बच्चे हैं क्या? नहीं, डिसीज के बच्चे हैं।
मैं उसकी दादी हुई। बाकी लोग देखेंगे। बाकी कोई बचे नहीं, सबके खिलाफ मुकदमा कायम कर Applicant has I'll filed withdraw it. first- I'll withdraw it then, sir. Learned senior counsel appearing for applicant prays for withdrawal allowed. I'm in jail since 5/5/23, sir. 5/5 से जेल में बंद हूँ। आप किस्मती ही है ना। हाँ, 5/5 से जेल में बंद हूँ। फिर भी बहुत टाइम नहीं हुआ है। 27/5 की तो घटना ही है। सर 1 मिनट, I'll just point it out, sir. वो भी गलत लिखा है क्या? सर ये जेल में बंद है। 5/6/23, sorry. 5/6/23. Application is dismissed as withdrawn. Number 66. इसमें ऑब्जेक्टर में मेरा नाम। Please, Your Lordship, this is the first bail application. The allegation against the applicant is that without having any license, my lords, he is selling the fertilizers and seeds. And the offences registered against the applicant are, my lords, under section 417 and 420 and section 3 and 7 of the Essential Commodities Act. My lords, what I humbly submit, my lords, except the section 420, my lords. Rest of Charge sheet is filed. My lords, I have no instruction personally, my lords. ये इनके खिलाफ 4 आपराधिक रिकॉर्ड सेम मामले हैं। और हमने सर लाइसेंस लगाया हुआ है। सेम मामले इनके ऊपर 2020 के भी हैं और 2022 के हैं और नकली फर्टिलाइजर तो नहीं बेच रहे ना। सैंपल नहीं लिए लॉर्डशिप इनने। नकली है। हाँ, नकली बनाते हैं और बकायदे नकली वाले में तो नहीं देंगे बेच। सर हमने असली बेच रहे होते बिना लाइसेंस के तो दे देते हैं। पाउडर। So with great respect, what I humbly submit, my lord. Yes. There were no sample taken before the registration of the FIR. Only on the basis of the some anonymous complaint, this FIR was lodged and नकली हमारा वाले में लाइसेंस तो भी लगा बिल्कुल हुआ नहीं है। देंगे। License You are लगा- causing loss to society also. Then my lord, आपने खुद तो क्राइम कर ही रहे हैं, दुनिया भर का नुकसान और करेंगे आप। then liberty may be granted after submission of charge. Application is dismissed. Yes, next. I pray for withdrawal, my lords. Counsel for applicant prays for withdrawal. Allowed. Application is dismissed as withdrawn. Number 67. My lord, may I please to appreciate this is the first bail application. Yes. I am jailed from past 1.5 years. First, the prosecution story is 3 persons: Raju, Raja, Saurabh is a deceased, and one Vishal Sonkar. फिर इन तीनों ने विशाल सोनकर के यहाँ पर एक पार्टी की some late night. Raju, Raja, और सौरभ. Saurabh is a deceased person. You know. yes, They had a party in the house of Vishal Sonkar, yes, and then thereafter they left for their home at late night. Now, yes, the early morning, the body of Saurabh was found in Nexa showrooms near Gadha police station, yes, and was seen by the uncle mama of this deceased Saurabh. Now, on the basis of apprehension and the last scene, the FIR has been launched against me. yes, state only last scene है। नहीं मनोडी इनके ऊपर ये आरोप आया है कि इनने आखिरी साथ में थे, आखिरी में साथ में थे दोनों, और लेकिन मारा जिसकी बेल हुई है मतलब वो पकड़ा था और इनने चाकू से मारा। आप ये मेन एक्यूज्ड हैं। इन्हीं से सीजर है, चाकू, सीजर इन्हीं से, ब्लड स्टेन्ड है। माय लॉर्ड। लास्ट सीन भी आप देखें सर, 2 दिन बाद मुझे पकड़ा गया। अगर मुझे इनका मारा रिकॉर्ड भी है। नहीं, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं सर, और 1.5 साल से जेल में है और आज तक एक विटनेस तक भी एग्जामिन नहीं हुआ। अगर हमने मारा होता आपने सर डिले का ग्राउंड लिया है और सर जी यस और नो? 6.2 में the period is more than 1 year has gone but not a single witness were examined by the prosecution. रिपोर्ट बुला लेते। Registry is directed to call for status report of the trial after 2 weeks, week commencing. Number 68. Objection has been filed. Yes. In this matter. Yes. My lord, I am there in custody since 19/6/2023. Yes. The incident is alleged to have taken place on 16/6/23. But initially the case appears to be that the gunshot was fired and it was misfired. The gunshot was itself fired by the deceased, my lord. This appears to be the initial case of the prosecution. Subsequently, it has been converted. It also appears from the various statements that, assuming that this has been fired by me, then this was an accidental fire.
Number 16/6/2023 is the date of the incident. Who is deceased? This is वेदिका ठाकुर. 16/6/23 को घटना होती है. 13 से 13:15 बजे के बीच. Objection is there. The incident takes place on 16/6/23. तो डॉक्यूमेंट तो आपने फाइल नहीं किए है ना? ये सर उसमें डॉक्यूमेंट पेन ड्राइव में नहीं फाइल किए सर. नहीं, ये तो आपका 29595 है ना ऑब्जेक्शन. उसका डॉक्यूमेंट्स भी हैं. उसमें डॉक्यूमेंट तो कुछ नहीं है. डॉक्यूमेंट्स हैं सर. एक हमारी शिकायत हमारी शिकायत है. ऑब्जेक्शन 1 एंड ऑब्जेक्शन 2, ऑब्जेक्शन 3 एंड पेन पेन ड्राइव. ड्राइव 3 चीजें 4 चीजें हमने फाइल. 4 डॉक्यूमेंट. पेन ड्राइव में क्या है? हमारी थाने में कि हमारी एफआईआर नहीं लिखी जा रही. घटना के बाद में हम एफआईआर लिखाने जा रहे हैं. वहाँ पे हॉस्पिटल के बारे में उसका खुद का डाइंग डिक्लेरेशन जो वीडियोग्राफ. You are having it? I'm having it. So only question is of prejudice of applicant. I don't have, Yes. but because the arguments began and later on it is said, that was the reason I just pointed out at the initial. Yes. Thank you. Yes. The incident had taken place on 16/6/23 between 13 and 15 hours. Yes. The deceased passes away on 26/6/23. Yes. Immediately after the incident, the deceased is taken to the Star Hospital by the applicant himself, Yes. and thereafter to Metro Hospital. The applicant is all along there, my lord. Yes. The first question is, if I was really intending that she should be killed, I would not have taken her to the hospital. You took her to hospital. Yes, this is the admitted situation. There is no quarrel about that. Yes. Now, my lord, initially when the FIR was registered, that was registered for the offence punishable under section 308, 338, 201, Yes. and 25 and 27 of the Arms Act. Yes. 308 clearly goes to indicate, my lord, because what the initial, and I filed a copy of the pen drive also containing the statement of the CSP at the first instance, where she is saying that it was a fire which took place on account of Vedika itself, my lord. I'll come down to that. कि वेदिका से ही फायर हो गई. अच्छा. ऐसा उनका बयान आ रहा कि उन्होंने अभी बताया, फॉर्मल बयान हमको लेना है, उन्होंने अभी बताया है कि उससे ही फायर हो गई है. There is no intention, no enmity is there. Everyone is saying the same thing. Now I'll refer to the documents, my lord, which are there. Who is Vedika Thakur? Vedika Thakur is the deceased. No, how she is linked with you? Friend? She was a friend of mine. Yes. No allegation that any Yes. such relations were there. Nothing is there. She came down to my office, my lord. A pistol was lying on the table. She asked why it is kept. I told her, no, she's not. It is not in a working condition. It appears that she took up that pistol and got fired. And this is clear from the statement of the CSP at the first instance. I filed a copy of the pen drive, which was floated in the media also, my lord. Yes. I'll refer to some of the documents, my lord. The first is the FIR, which is deceased का कोई statement है? है. सर उसके 3 स्टेटमेंट रहेंगे. एक देहाती नालसी उसी के आधार पर लिखी गई है. उसके बाद 161 का बयान है, एक बैंक डिक्लेरेशन, क्योंकि 26 तारीख को मरी है, 16 तारीख की. आपका जो सबसे फेवरेबल है वो पढ़ दीजिए. तीनों एक से ही हैं सर. एक से ही हैं. तीनों के पढ़ने से ये लगता है कि इट वाज अ मिसफायर. It was not in a good condition. Please read it. I'll read it, sir. I'll first refer to देहाती नालसी, sir. Yes. कोई भी एक पढ़ दीजिए. Only one. Page 53, sir. Yes. Part of annexure A2, sir. Yes. At page 53, sir, first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh line. प्रियांश मुझसे बोल रहा था कि पिस्टल खराब है और नहीं चलती है. फिर उसने मेरे पैर की तरफ पिस्टल करके लोड करके चला दिया, जिससे मेरे पेट के पास गोली लगी है. पेट के पास लोड करके चला दिया. उसको ऊपर से देख लेंगे. मैं नेपियर टाउन जबलपुर में रहती हूँ, MBA की पढ़ाई कर रही हूँ. प्रियांश विश्वकर्मा को 2-2.5 साल से जानती हूँ. मेरी दोस्ती है. दिनांक 16/6/2023 को लगभग 1 बजे मैं प्रियांश विश्वकर्मा के ऑफिस अपने मोबाइल बेचने के लिए गई थी. प्रियांश ऑफिस में था, उसके टेबल में एक पिस्टल रखी थी, तो मैं सोफे में बैठ गई
प्रियांश मुझसे बता रहा था कि पिस्टल खराब है और नहीं चलती है। फिर उसने मेरे पैर की तरफ, इट इज पैर ओनली, पैर की तरफ पिस्टल करके लोड करके चला दिया, जिससे मेरे पेट के पास लग गए। Basically, it was a misfire. That's all, my lord. What is coming out from here? Then the next document is. पैर पे चलाया तो पेट पे कैसे लगा? वो सर पिस्टल खराब थी, उसने कहा ही ना पिस्टल खराब है, वो खुद ही कह रही है। ये मैं फिर से पढ़ देता हूँ सर। प्रियांश मुझसे बता रहा था कि पिस्टल खराब है और नहीं चलती है। Probably it appears that he was trying to show that this is not in a working condition and he loaded the pistol. It is not working. फिर उसने मेरे पैर की तरफ पिस्टल करके लोड करके and then there are pen drives which have been filed by me, my lord. It is like what? I'll invite your lordships to a document which is there. Yes. If lordships are kind enough to kindly see to the spot map which has been prepared. Yes. According to the police. No, because deceased herself is saying कि मेरे पाँव की तरफ चला दिया। गोली तो उसको छाती में लगी. So it may be recoil or. No, it is not a recoil. It's a direct shot. Kindly see, it's a direct shot. कितनी दूर से? It is there, sir. Kindly see to this, sir. सर वो डिसीज खुद ही कह रही है कि पाँव की तरफ पॉइंट आउट किया। मैं आपकी मानता हूँ सर, ये बात अब ये कब हुआ? हो सकता है झटका ज्यादा लगने से ऊपर हो गया। सर मेरा निवेदन 2 मिनट का। 16/6/2023 की घटना है 13:15 पे। लॉर्डशिप में भी काइंड ऑफ टू काइंडली नोट। यस। For the whole of 16th, this girl in an injured condition was made to move at various places, from one hospital to another hospital to the third hospital, trying to suppress the matter. पहला स्टेटमेंट इनका क्या है? दैट वुड बी देयर कि वहां पे पहले अस्पताल में लेके गए, सबसे पहले ले गए स्टार सिटी में। वहां बोलते हैं कि ये लड़की, इनने स्टेटमेंट वहां पे दिया कि ये लड़की, वहां पे बताना कि लड़की गिर गई और कांच लग गया। नो, दैट इज नेचुरल। अगर गलती से भी लग गया है तो आदमी अपने को बचाने की कोशिश करता है। मैं आपकी वाली बात मानता हूँ। अब मैं निवेदन करूंगा इसमें, इफ लॉर्डशिप आर काइंड ऑफ टू काइंडली कम डाउन टू द डॉक्यूमेंट व्हिच इज देयर। पुलिस घटना स्थल पे 4 शॉट पाती कमरे में। When she was admitted? She is admitted on 16th itself. 16. Immediately she was taken. she was not. इंसिडेंट 1 बजे का है। 1:15 का इंसिडेंट है सर। हाँ, एडमिट कब हुई? भर्ती हुई है शाम को 7:36 पे। 7:36 पे 16 तारीख को। And date of same day of the incident and date of. You are saying that there were 4 shots. Yes sir. डॉक्टर जो पुलिस ने एफएसएल यूनिट ने जो किया, घटना स्थल प्रियांश विश्वकर्मा का ऑफिस निरीक्षण किया गया, एफएसएल विशेषज्ञ से कराया गया, जहां गोली के निशान 4 गोली के निशान दीवार पे पाए गए, जिसे बैटमैन पेपर से स्क्रैप करके लिया गया। चारों होल पर वॉल पेपर कटिंग जब्त किया गया। घटना स्थल पे काले रंग के लेडीज सैंडल्स मिला। इट इज नॉट वन शॉट विच हैज बीन फायर्ड। और ये कब के हैं ये 4 शॉट? ये इसकी रिपोर्ट अभी इनके एफएसएल यूनिट के पास में भेजी गई है। ये एफएसएल रिपोर्ट, बैलिस्टिक दोनों की रिपोर्ट अभी आई नहीं। कितनी दूर से चला, दैट चमड़ी भी निकल के, दैट रिपोर्ट हैज येट नॉट कम। ये 4 शॉट्स सर ये पुराने कभी के हैंगे, ये अभी के नहीं है। सिंगल शॉट का केस हैगा सर। ये वही कह रही, लड़की कह रही कोई 2 शॉट नहीं हुए, 3 नहीं हुए, 4 नहीं हुए। This not the case of the prosecution also. That is her dying declaration. Her dying declaration is there, sir. No reason to disbelieve it. One of the eyewitness also. सर एक आई विटनेस है जो बोल रहे हैं इनके बीच में लड़ाई हुई। अभिषेक झारिया। मेरा निवेदन है सर। क्या बोल रहा है? और ये अभिषेक झारिया कोई और आदमी नहीं है, आप ही का कर्मचारी है, आपका कर्मचारी है। क्या कहता है? ये कहता है, मैं दुर्गा नगर सोनसो रहता हूँ, वर्तमान में धनवंतरी नगर में लीला ग्रुप्स ऑफ बिल्डर्स ऑफिस में काम करता। दिनांक 16/6/23 की रोज सुबह 10 बजे ऑफिस खोला, ऑफिस सब बैठ गया। दोपहर करीब 12-1 बजे वेदिका ठाकुर आए, फिर उसके बाद प्रियांश विश्वकर्मा आया और दोनों ने पानी पीने को कुछ देर बाद उसके चाय लेकर गया। प्रियांश विश्वकर्मा वेदिका दोनों अकेले ही ऑफिस में थे। जब मैं चाय लेकर वापस आया तो प्रियांश और वेदिका आपस में लड़ झगड़ कर रहे थे और लड़ते हुए प्रियांश विश्वकर्मा ने वेदिका को गोली मार दी। फिर प्रियांश विश्वकर्मा और एक भैया थे जो वेदिका को लेके गए। आई विटनेस हु वाज देयर। ये तो उस कमरे में इनका खुद का कर्मचारी है। और ये जो स्टेटमेंट आया सर, ये तो इस महिला को डिसीज का इलाज नहीं हो रहा था, इलाज नहीं करवा रहे थे, फ्रॉम एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल। और वहां पे आप देखेंगे एक अस्पताल में, उस अस्पताल वहां पे उनके पास में कोई फैसिलिटी नहीं है, दैट इज स्टार सिटी। स्टार सिटी से दूसरे अस्पताल लेके गए।
ये भी हो सकता है हॉस्पिटल ने ना लिया बिकॉज इट इज अ केस ऑफ नो दे डिड नॉट टेल, उनने वो छुपाने की कोशिश की, दैट्स अ केस ऑफ एमएलसी के संदर्भ में। उन्होंने बताया कि वहां पे अस्पताल में जाके बोलते हैं कि इसके संदर्भ में, और इनको सब पता चल गया, इनके पेरेंट्स को खबर नहीं की, इनके एक दोस्त को बुला लेते हैं इनके पेरेंट्स के संदर्भ में, इनके पेरेंट्स के बारे में, ये शैलेंद्र ठाकुर के, और इनने फिर मैं लाइसेंस गन नहीं है और अस्पताल में सेटिंग करके अस्पताल चालू करवा लिया हूँ, मेरी गोटेगांव में बात हो गई है, मैं अस्पताल में ऐसा शो करूँ कि मैं गोटेगांव में था, वेदिका मेरे साथ गोटेगांव गई थी, वहां रास्ते में गन मिली, जो रास्ते में चल गई उसे लग गई, मैंने अपने सारे फुटेज डिलीट कर दिया हूँ जिससे वेदिका ना फरे, इस इलाज चालू करवा रहे हैं, किसी को मत बताओ। यू हैव टू आंसर अबाउट अभिषेक ठाकुर, that's all. My lord, Abhishek Thakur's statement has been recorded in 14/7. 16/6 is the date of the incident. 14/7/23 his statements have been recorded. He has made a complaint to the SP also saying this कि my statement have been wrongly recorded. I never gave these statements which are part of the charge. Abhishek Jaria. Abhishek Jaria. And his statement important is 16/6 is the date of the incident. 14/7 the statements have been recorded. It is not the case of the prosecution that Abhishek Jaria went away, he was absconding, he was not found. ये अभिषेक जारिया की कंप्लेंट है, कंप्लेंट नहीं है सर, इससे करिए का स्टेटमेंट He has written to the SP. He has a copy of that. We can file that also. It is there. He gave a complaint to the SP saying this key statements have been incorrectly recorded. और 14/7 को ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा है सर, 16/6 की घटना है। ये देख लीजिए इन्होंने कोई कंप्लेंट करी है क्या कि स्टेटमेंट नहीं उसका तो उसका अंदर 164 स्टेटमेंट हुआ सर, 164 हुआ मैशेट क्या स्टेटमेट हुआ उसका, तो 161 and 164 आल्सो आपका 161 हो सकता है, एक ही दिन दोनों स्टेटमेंट हुए हैं। हाँ तो मैशेट का आपका मैशेट कैसे पहुंच जाएगा स्टेटमेंट देने को, 164 का है, स्टेट क्या इनकरेक्ट कैसे रिकॉर्ड होगा, मैशेट का कैसे रिकॉर्ड होगा। After that he made a complaint कि it was under the pressure of the police that he was made to give it. And sir, there is no reason why they did not record the statement from 16/6 up to 14/7. तकरीबन एक महीना पूरा निकल जाता हैगा। It is not the case of the prosecution also that Abhishek Jaria was not found, he was absconding, he had run away, he was out of town. This is also not the case of the problem. There was no reason why the police did not record the statement for full 1 month. So And it is the case of accidental fire sir, वो तीनों और सर एक पेन ड्राइव आप देख लेंगे जो मैंने फाइल करी, उसका ट्रांसक्रिप्शन मैंने लगाया, annexure A3 is the copy of that and I filed the complete transcription. Yes. That is annexure A3 is the pen drive and A4 is the transcription at page 182. Yes. A3 is the pen drive sir, page 182 में गाइडेड सी। जो पेन ड्राइव के अंदर है उसी को हमने सर, ये भुवनेश्वरी ठाकुर है, ये वेदिका की मौसी है, हम ही ने फोन करके वेदिका ठाकुर की मौसी इसको बुलाया और वेदिका ठाकुर के ब्रदर को बुलाया, शैलेंद्र को, जिनकी तरफ से ऑब्जेक्शन है। शैलेंद्र का बयान भी मैं पढ़ दूंगा कि शैलेंद्र ने ये कहा कि वेदिका ने क्या बताया उसको। आई रीड आउट द स्टेटमेंट ऑफ शैलेंद्र आल्सो हु इज द ऑब्जेक्टर ओवर हियर। माय लॉर्ड, वी जस्ट रेफर टू द पेन ड्राइव स्टेटमेंट ऑफ भुवनेश्वरी ठाकुर। शी वाज कॉल्ड बाय मी ओनली। शी सेज प्रियांश विश्वकर्मा जो मृतिका वेदिका ठाकुर बहुत अच्छे फ्रेंड है, द्वारा मुझे करीब 2 बजे फोन आया कि वेदिका की तबीयत खराब है। जब मैं वहां पहुंची तब उन्होंने मुझे बताया उसे गोली लगी है जो कि खुद वेदिका ठाकुर से चली है। Now, maybe this statement of Vedika may not be correct. She wanted to save probably the applicant and therefore she took it upon her. It might be, but it is a case of accidental fire. ये यहाँ पर important है, मुझे करीब 2 बजे, सेकंड लाइन में आप देखेंगे, प्रियांश विश्वकर्मा जो मृतिका वेदिका ठाकुर के बहुत अच्छे फ्रेंड है, द्वारा मुझे करीब 2 बजे, 1 और 1:15 के बीच का इंसिडेंट है, 2 बजे फोन करके खुद ही करिए, द्वारा मुझे करीब 2 बजे फोन आया कि वेदिका ठाकुर की तबीयत खराब है। आई माई गिव अ कॉल टू द मौसी ऑफ वेदिका। जब मैं वहां पहुंची तब उन्होंने मुझे बताया कि उसे गोली लगी है जो कि खुद वेदिका ठाकुर से चली है। दिस स्टेटमेंट माइट बी बाय वेदिका ठाकुर टू सेव मी माय लॉर्ड, बिकॉज वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। नथिंग, नो मैलिशियस एक्ट हैज बीन अलीज्ड बाय वेदिका ठाकुर एनीवे। चलिए, ऐसा उन्होंने बताया, तभी से हम उन्हें हॉस्पिटल और MRI कराने के लिए लेकर गए। पहले स्टार हॉस्पिटल लेकर गए, उसके बाद MRI कराने ले गए। फिर हम यहाँ से वहाँ हॉस्पिटल, जब मैंने घर वालों को कॉल किया, इसके बाद वो लोग मुझे यहाँ पे सब मतलब पेशेंट और सब लोग यहाँ, वजह तो ऐसा कुछ समझ नहीं आ रही है। उससे पूछा गया कि क्या वजह है, तो शी सेज कि मुझे समझ नहीं आ रही क्या वजह है, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ तो नहीं था कि कोई दुश्मनी थी, मुझे ऐसा कुछ तो नहीं हुआ। वो शायद बीजेपी नेता हैं और तो मैं कुछ नहीं जानती। वे वेदिका ठाकुर के फ्रेंड हैं। जब उनको गोली लग चुकी थी
मुझे उसके बाद मुझे फोन आया था कि वेदिका की तबीयत खराब हो गई है, आप आ जाओ। वेदिका अभी MBA स्टूडेंट है, गोली उसके अंडर आर्म्स के नीचे लगी है। वेदिका नेपियर टाउन में रहती है, मैं उसकी मौसी लगती हूँ। देन द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज ऑफ CSP प्रतिष्ठा, शी इज द CSP ओवर देयर। इसमें दिस इज रिपोर्टेड टू द मीडिया एंड दिस पेन ड्राइव part of the charge sheet. This is part whatever is. जस्ट नोट लेट मी Complete कर लीजिए, please कर लीजिए. Yes. इसमें हम लोग लड़की से बात कर रहे हैं। द CSP सेइंग, हम लोग लड़की से बात कर रहे हैं। लड़की कल बयान देने की स्थिति में नहीं थी, परंतु आज वो बयान दे रही है। बयान के लिए हमारे यहाँ के अधिकारी कर्मचारी गए हैं। इसी के साथ जो आरोपी है उसे ढूंढने का प्रयास किया गया है। 19th he himself surrendered. I have also filed a pen drive which he has made, that video which he has made, that he was never absconding. On 19th he himself goes to the police and surrenders. प्रयास किया गया जिसमें जो सुगाताला है नरसिंहपुर में वहां चेकिंग लगाई थी, परंतु वहां से गाड़ी छोड़कर भाग गया। अभी गाड़ी हमारे कब्जे में है। आरोपी अभी फरार है, उसे अभी ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। एक्चुअली जब तक बयान नहीं होंगे लड़की के तब तक हम लोग क्लियर नहीं कर सकते। अभी हमें भी नहीं पता है, क्योंकि लड़की ये कह रही है, फॉर्मल स्टेटमेंट्स वर नॉट रिकॉर्डेड बट शी वाज सेइंग, क्योंकि लड़की ये कह रही है कि उसके खुद के हाथ से गोली चली है। Maybe this was because we are very good friends. Vedika never wanted to implicate me, and therefore she took the blame upon herself कि उसके हाथ से चली। But it was a case of accidental fire. Then the next statement which is there is mother of Vedika. What she is saying, my lord, may just see last 4 lines. Yes. और थोड़ी लापरवाही मेट्रो हॉस्पिटल में भी हुई है। 5 दिन तक उनको जो ऑपरेशन उनको पहले दिन करना था उन्होंने 5 दिन बाद किया है। जो पॉइजन उसके पूरे फैल चुका है। न्याय मिलना चाहिए, बेटी को निष्पक्ष चाहिए। नाउ आई आल्सो रेफर टू द स्टेटमेंट ऑफ द ब्रदर व्हिच इज देयर एंड हु इज ऑब्जेक्टिंग ओवर हियर, दैट इज एट पेज 110 my lord. This part of Malon got it at page 110. That is A4. A2 Malon. Part of Annex A2. A2. Yes. Charge sheet has been filed Malon. Last 4 lines. वेदिका ने दिनांक 17/6 को सुबह 6-7 बजे के बीच में बताई कि गोली प्रियांश के हाथ से लगी है। मैं उसके ऑफिस पैसे के काम से गई थी, जहां पर सोफे में बैठी थी। वहां पर प्रियांश के टेबल पर पिस्टल रखी थी, जिसे प्रियांश बताया कि पिस्टल चलती नहीं है, खराब है। फिर वे लोड कर वेदिका मोबाइल देख रही थी, अचानक से चली तो गोली वेदिका को लग गई। इट वाज अ केस ऑफ एक्सीडेंटल फायर my lord, इट वाज नॉट इंटेंशनल। वेदिका देख रही थी। नहीं जी, वेदिका मोबाइल देख रही थी। वेदिका मोबाइल देख रही थी। So, my lord, one thing is clearly emerged, and initially also on the basis of the Dayati Nalchi, the FIR was recorded under 308, not even for 307. This clearly showed, my lord, that I never intended. Assuming that the story that she has died, there's no quarrel about this, my lord, that she died on account of the shot. But then whether it was intentionally fired or not, this is the question. In the first statement, all these statement, she says खराब थी, टेबल पर रखी हुई थी। मैं तब जब मैंने पूछा तो उसने लोड करके दिखाया, पैरों की तरफ से उसने एम करा और वो चल गई। So this is in fact the case, my lord. And Shailen, who is objecting over here, my lord, he himself gave this statement which I read out at page 110, my lord. Immediately उसकी मौसी को कॉल करा, 2 लोगों को कॉल करा, दोनों लोग वहां पर आए और ये शैलेन ठाकुर का स्टेटमेंट था। And hospital was taken. I was the person who took her to the hospital, then to the second hospital also. This is the total case, my lord. MRI के लिए लेके गए, ये सब बातें आई हैं। Yes. So what I say, my lord, that this is not a case where 302 would be attracted, my lord. Yes. And he is there in custody. Charge sheet has been filed tomorrow. What will emerge from the trial, my lord, we do not know. And the person who is objecting this statement, I read out. Yes. That was murder. A girl aged about 24 years, 26 years, who's resident of Napier Town, goes to विजयनगर। जो वर्जन आया है पैसे लेने के लिए आ गई। ये जितने भी स्टेटमेंट्स आपके समझ पढ़े जा रहे हैं सर, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट if Lordship are kind enough to kindly see to this pen drive,
the FIR was not got recorded because of the influence which was being pressed upon because of the political patronage this gentleman has. Lordship, the incident is said to have taken place on 16/6/23 at 13:15 hours. Lordship may be kind enough to kindly note. Yes, the FIR has been recorded with the Dehati knowledge itself, जिसको आप बोलते हैं, पुलिस को खबर मिल गई कि गोली लग गई. That is the cognizable offence has happened. Whether it's accident, what my learned friend says, or whether it is the FIR ought to have been recorded that there has been a shot which has been fired. No FIR for next 24 hours. The FIR came to be recorded by way of Dehati knowledge on 17/5/2023 at 13:30 baje. Now this is because of the pressure and the political patronage this gentleman was having. In the morning of 17 तारीख को 16 तारीख को सब कुछ हो गया. 17 तारीख की सवेरे इसके घर के लोग जाते हैं थाने में रिपोर्ट कराने के लिए. थाने में आप लॉर्डशिप वुड बी काइंड ऑफ टू काइंडली सी माय लर्नड फ्रेंड इज यूजिंग द मीडिया. दिस इज अ रिपोर्ट व्हिच इज देयर. यहाँ पर थाने के अंदर खड़े होकर बोले कि साहब हमारी FIR लिखो. FIR नहीं लिखी जा रही. Anybody going to the police station making a report about it, it is the duty of the police to get an FIR recorded. The FIR is not recorded. There, this is, if Lordship permits me, I can play it down. It is there, where these people are shouting over there. Who was the police officer there? मतलब the Lordship can see. Lordship can see it over there. क्या नाम है उसका? सर नहीं चला, उसमें देख रहे हैं पुलिस ऑफिसर्स, उसमें सब पुलिस थाने के अंदर जाके इन लोग थाने में शिकायत कर रहे हैं. Life could have been saved. Then उसी टाइम आप सर FIR मैं निवेदन कर रहा हूँ उसके आगे. यहाँ खत्म नहीं होता है. आपने बोला हम इसको उस अस्पताल में लेके गए. हम उस अस्पताल में जहाँ लेके गए उसके संदर्भ में लॉर्डशिप में भी काइंड ऑफ टू काइंडली सी द स्टेटमेंट ऑफ डॉक्टर अमित खरे. उनके अस्पताल में तो कुछ था ही नहीं जिस अस्पताल में आप लेके गए. ये थे साहब, मैं ये है डॉक्टर अमित खरे का स्टेटमेंट. मैं उपरोक्त पते पे रहता हूँ, स्मार्ट सिटी का संचालक हूँ. मैं BA MS की डिग्री करके रखा हूँ. BA MS डॉक्टर के यहाँ पे आप लेके गए. रीवा BA MS की डिग्री से मैं 2017 में अस्पताल प्रशासन के नियम अनुसार कलेक्टर गाइडलाइंस में खोला. मेरे अस्पताल में 2 परीक्षित डॉक्टर सचिन नामदेव ड्यूटी डॉक्टर BHMS BAMS एवं डॉक्टर नीलकमल सोहाने 10 स्टाफ नर्सिंग. 16/6/23 को करीब 1 बजे प्रियांश विश्वकर्मा का फोन आया और उसने बोला कि इमरजेंसी है. मेरी दोस्त बाथरूम में गिर गई है, ब्रेस्ट में चोट लगी है. तो मैंने बोला हमारे अस्पताल लेके आओ. फिर लगभग 1 बजे प्रियांश अपने 200 काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी अस्पताल लेकर आया. फिर मेरे पास प्रियांश ने फोन किया, मेरे को बोला कि इलाज करवाओ. तो मैंने स्टाफ नाउ काइंडली सी मतलब दी कॉम्पिटेंस जहां पे आप लेके गए, क्योंकि बिकॉज दे वांटेड टू सप्रेस द होल इंसिडेंट. स्टाफ ड्रेसिंग करें. प्रियांश ने मुझसे बोला कि बाथरूम में गिरने से चोट आई है, इसलिए कोई फॉर्म नहीं भरा गया था. दवाइयां अस्पताल से ही दी गई. करीब 1:30 बजे अस्पताल पहुंचा. 1:30 बजे मैं अस्पताल पहुंचा तो मैंने वेदिका को देखा और उससे बात की तो उसने बताई कांच लगी, कोई दर्द नहीं होना बताया. लगभग 2 बजे पैरों में दर्द बताया और अस्पताल की एक्सरे मशीन खराब होने से हमारे एक्सरे मशीन शो नहीं हो रहा था, जिसमें हमने सुपरा डायग्नोस्टिक भेजा एवं MRI एक्सरे करा के वापस आया. प्रियांश ने बोला आपके यहाँ सर्जन नहीं आ रहे, हम समर्थ अस्पताल लेकर जा रहे हैं. हमने प्रियांश पूजा उसके साथ एक्सरे के लेके गए थे, दूसरे अस्पताल में लेके गए. प्रियांश ने मुझे कुछ नहीं बताया, ना ही कोई रिपोर्ट दिखाया. मुझे पता नहीं कि वेदिका को गोली लगी. रात करीब 9-10 बजे न्यूज में देखा वेदिका को गोली लग गई. नाउ दिस इज द हॉस्पिटल वेयर शी वाज टेकन. देन दे टेक हर टू द अनदर हॉस्पिटल. अब ये OT अटेंडेंट वो बोलते हैं वहां पे कौन है OT अटेंडेंट साहब के वहां पे. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इफ शी वाज टेकन टू द हॉस्पिटल एंड दे से इट वाज अ केस ऑफ एक्सीडेंट एंड वी हैड फुल सिंपैथीज फॉर द गर्ल. The onus was घटना गढ़ा में हो रही है. They could have taken her to medical college. It was only this intention that she was kept in this particular hospital. कि यहाँ पे something happened, she died, nothing would be there, there's nothing reported over there. Then she's taken to another hospital, Life Medicity. वहाँ पे training nurses के पास में उनको रखे. वहाँ पे भी नहीं बताया कि इसको कांच लग गया, वहाँ कांच लग गया. अब आप kindly consider the condition of a woman, girl who has been shot from here, from the chest. आर्म के नीचे गोली लगी. आप बोलते हैं पैर पे गोली हमने चलाई. गोली आर्म के नीचे कहां से लग जाएगी सर? अब दूसरी ये तो I'm down to now kindly consider the mentality of a man. पुलिस जब इनका केबिन चेक करती है, उस केबिन में 4 शॉट. लॉर्डशिप पोज में क्वेश्चन कब के हैं, बट काइंडली कंसीडर कि वहां पे गोली के शॉट्स पाए जा रहे हैं ऑफिस में. काइंडली कंसीडर द नेचर एंड द कैरेक्टर ऑफ दिस जेंटलमैन.
कि जो अपने ऑफिस में बैठी गोली पे गोली चला रहा है? आपके ये तो पुलिस ने ही जांच में एफएसएल टीम ने पाया. It is not that simple. This man is fully conversant with the gun, and the gun has not been found that उसमें कोई accidentally चल सकती. It's a pistol. If Lordship sees to the picture of that particular gun which has been seized over there, they have made a picture that has been filed along with the charge sheet. If that is seen, my lords, it's a not a gun जो जिसमें misfire हो सकता है, कुछ हो सकता है. उसमें पीछे pressure लगेगा. This is the gun. It's not a कट्टा. एंड देन दिस इज सप्रेस्ड. एंड इसके ऊपर से आप बोलते हैं कि आपके ऑफिस में 4 जगह शॉट्स पाए गए ऑफिस के अंदर. दिस इज द रिपोर्ट गिवन बाय द पूरी एफएसएल टीम व्हिच गोज ओवर देयर. देन मानोज अब ये वहां गए तो इनने जो दूसरे को बुलाया घर के, आपको पता चल गया हमारी लड़की को गोली लग गई. व्हाट वाज योर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट? आपने अस्पताल ले गए जिस अस्पताल में कुछ नहीं. देन दिस गर्ल इज बेगिंग फॉर लाइफ. इवन दी एप्लीकेंट्स आर बेगिंग कि हमारी लड़की का इलाज कराओ. ये आपको स्टेटमेंट मिलेंगे सर, इसमें स्टेटमेंट है मदर का कि हमारी लड़की का इलाज कराओ. फिर इन लोग जाते हैं थाने में रिपोर्ट करने के लिए. दैट इज व्हाई दिस जो लड़की ने अपनी माँ को स्टेटमेंट दिया. लड़की के माँ का स्टेटमेंट देखें सर, दैट इज एन ओरल डाइंग डिक्लेरेशन. ऑल दिस इज मैनिपुलेटेड फॉर 24 hours a day. Everything has been manipulated. It is not that immediately this version has come down from the mouth. The girl was begging for her life. Kindly consider. और मेट्रो कब पहुंचते हैं सर? घटना 13 बजे की है. आप एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल से आप उसको गाड़ी में डाल के काइंडली कंसिडर उसके अंदर कितना पेन होगा उस लड़की में. दैट शी हैज सस्टेन्ड अ गन शॉट व्हिच हैज गॉन थ्रू एंड थ्रू और जाके आपकी स्पाइनल कॉर्ड में अटक जाती गन वो गोली. एंड देन 7:30 बजे रात को जब सब जगह आपने देख लिया कुछ नहीं हो सकता, तो अब आप मेट्रो अस्पताल में लेके जाते हैं एट 7:30 in the night. From 1:30 to 7:30 in the night, this girl is just on the roads, roaming from one place to another place. My lord, the basic thing is somebody sustained a gunshot injury. The person is not required to, is not supposed to move. The girl is made to move. वो गाड़ी लेके आए दूसरे उस अस्पताल जहाँ पूछने पर आप दूसरे अस्पताल में ले जा रहे हैं, वहां बोलते हैं इसका MRI कराया. और MRI कराया तो आपने डॉक्टर को MRI नहीं दिखाया. वहां से लेके भाग गया दूसरी जगह पहुंचे दूसरे अस्पताल, वहां पे कुछ नहीं हुआ. फिर अल्टीमेटली जब कुछ नहीं, जब इन लोगों ने चिल्लाना, इनके घर के लोगों ने चिल्लाना चालू कर दिया, तो ये मजबूरी में उसको मेट्रो अस्पताल लेके गए. It's not a case, my lord, what is being portrayed. This girl gave a statement because there was no treatment being provided to her. She wanted for help and this was a gasping statement which has been given. Then what? जब उसकी कंडीशन ठीक होना चालू हुई, then she gives a statement. Kindly consider that statement. Then मनोज, आपने बोला कि हमारे नौकर को, आपका नौकर था, आपके ऑफिस का तो कोई दूसरा स्टाफ एग्जामिन नहीं हुआ. ये नौकर गायब थे. पुलिस को जब इन्वेस्टिगेशन दौरान ये नौकर गायब था, इनका जो अभिषेक झारिया, he was not available. Then he was made available. इनको भेजा गया. When he was made available, he comes down with the best because इनके ही स्टेटमेंट के अनुसार girl reaches the office before the accused reaches the office. That is evident from his statement. मालूम अभिषेक का स्टेटमेंट अगर आप देखें, I'll narrate. I'm reading this 164 statement of अभिषेक. मैं धनवंतरी नगर में लीला ग्रुप ऑफ बिल्डर्स के ऑफिस में काम करता हूँ. दिनांक 16/6/23 को रोज की सुबह 10 बजे ऑफिस खोला, ऑफिस सफाई की, बैठा रहा. फिर दोपहर 12-1 बजे वेदिका ठाकुर आई. फिर उसके बाद प्रियांश आया. मैंने दोनों को पानी दिया. फिर कुछ देर बाद उसे चाय लेने गया. प्रियांश और वेदिका अकेले थे. जब मैं चाय लेकर वापस आया तो देखा प्रियांश और वेदिका आपस में लड़ झगड़ रहे हैं और लड़ते लड़ते प्रियांश ने वेदिका को गोली मार दी. I pause over here for a moment and come down to the statement of the mother. मदर को उसने स्टेटमेंट दिया. ये डिसीज का स्टेटमेंट पढ़ी जो आप बोले थे वो ठीक होने लगी जब उसने क्या स्टेटमेंट? हाँ सर, है उसने बोला. क्या बोला? मैं before the magistrate. Yes. On 17/6/2023. Yes. मैं प्रियांश विश्वकर्मा के ऑफिस धनवंतरी स्थित है. दिनांक 16/6/23 को 12:50 बजे गई थी. वह मेरा दोस्त, मैं अपनी मोबाइल बेचने गई थी. मेरा मोबाइल बेच के मुझे पैसों की जरूरत थी. मेरा मोबाइल अच्छे रेट में बेच दे, मुझे पैसे की जरूरत थी. मैंने पायल खरीदी थी, मुझे पायल का पैसा देना था. रसल चौक में सोनी की एक दुकान है, उसका बगल में जो उसे देना बकाया देना था. पायल मैंने मम्मी के लिए खरीदी थी. प्रियांश विश्वकर्मा एक नौकर वहां उपस्थित था. उसने मुझे पानी दिया, वो बाहर चले गया. वहीं पर एक पिस्टल रखा था सामने टेबल पर, उसके नीचे पैर के साथ सटाकर रखा था. लोड किया. मैं वहां नहीं समझ पाई कि वह क्या कर रहा है. मैंने मोबाइल चला रही थी, तब मेरा ध्यान गया कि प्रियांश विश्वकर्मा मेरे पेट से
पेट की ओर गोली चला दी। मैंने जोर से चिल्लाया कि तूने क्या कर दिया। तत्काल मेरा पैर शून्य हो गया। मुझे लगा कि पैर में गोली लग गई, किंतु मेरे पेट पे लगी थी। मैंने माँ को बुला दो। उस समय प्रियांश ने दोनों मोबाइल ले लिए और कब अभी किसी से नहीं बुलाना है। फिर मैंने उसका स्कॉर्पियो आई और अभिषेक और प्रियांश ने पकड़कर स्कॉर्पियो में लिटा दिया और स्मार्ट सिटी ले गए। वहां पर एडमिट किया। अस्पताल की नर्स ने कपड़ा उतारा, इंजेक्शन लगाया। वहां पर बुला दो, मेरी माँ को बुला दो। तो उसने, प्रियांश ने कहा कि घबरा जाएगी, पूजा को बुला देता हूँ। उसके बाद मेरे से पूजा का मोबाइल नंबर लिया। फिर पूजा आई, रोने लगी। मैंने पूछा सच सच बताओ क्या हुआ। सीटी स्कैन करके पूजा और मैं प्रियांश के हॉस्पिटल गए थे। मुझे पता नहीं था कौन सा हॉस्पिटल था। पूजा ने बताया कि फिर हॉस्पिटल आ गए हैं स्मार्ट सिटी, और डॉक्टर को पता नहीं उन्होंने क्या कहा, अपने माँ बाप थे बुला लो, तब FIR कराओ। प्रियांश ने कहा कि पूजा को प्रियांश के पैर पड़े और कहा कि घर वालों को बुला दो, उसे कुछ हो जाएगा। दिस इज अगेंस्ट यू? No, it's not against me. I'll just point out. My lord, kindly, what my lord friend was arguing, that from here to there we were taken, sir. My lord, kindly have a statement. Look at one of the He says that you pointed the. Sir, ये तीन statement है. Sir, सबसे पहले there are three dying declaration. One is 164, another is the dying declaration, another, all three would be termed as dying. And the first is the Yasin Alchi, which has also been signed by her, which I read out at the first occasion. I also refer to the 161 statement also, my lord. My lord, may just have a look at one of the statement. जो first जिसको बुलाने के लिए और हमने उसको फोन करके बुलाया, वो मौसी है उसकी. Why police officer did not registered FIR? और एक और चीज सर इम्पोर्टेंट है ये, और एक और चीज देख लें. अभिषेक झारिया यहीं से काउंटर हो जाता है सर. जो आपने पढ़ा है, अभिषेक झारिया यहीं से गलत साबित हो जाता है कि ये लड़की कह रही है कि वो बाहर चला गया. He was not present. The statement, I'll just refer to. No, but she takes her name that he was. नहीं, वो उस समय नहीं रहा, वो खुद कह रही बाहर चला गया. My lord, just have a look at this. I'll just refer to that. At page. ये बात का dying declaration है, that is corroborating with. Sir, the earlier. Sir, all the earlier or the versions of all the person is corroborating with the first instance that he never intended. I'll just refer to that part. First, I'll counter the statement given by Abhishek Jaria from the own dying declaration of the deceased. Page 106 में kindly be seen, sir. एक गवाह सबसे पहले आपने कहा he is eyewitness to the incident. Now, if we believe this dying declaration, then this statement of Abhishek Jaria is entirely false, my lord. And Abhishek Jaria has also made a comment. He may not have intended that. But he was having knowledge that death could have been caused by. But he was not having, because he had the stomach. He had this knowledge that this is not in a working condition. Then also why he took such a risk? Because when she asked it at the first instance, he may not have mens rea, but he was having knowledge that he was having pistol in his hand, and he having a pistol in the hand, my lord. If he doesn't, if I am knowing something that this is not in a working condition, then the knowledge would not be there. Firing this. So he took the risk. Knowingly he took the risk. If I know the fact that this is not in a workable condition, my lord, then you cannot play with a gun. Well, it was just a toy which was lying over there because it was not in a working condition. It was not in a work. My lord, may just have 2 or 3 things I wanted to point out. Yes. Sir, ये 4 gunshot, 4 shot gunshot. 4 gunshot नहीं. Only question is. This is only. You took the risk. Sir, you are knowing that you are having a pistol. मैं तीनों डाइंग डिक्लेरेशन. और आपने नीचे भी नहीं किया, उसके पेट की तरफ मार दिया. पहला आप देख लें, देहाती नालची मैंने पढ़ के बताया था, नीचे की तरफ था. वो तो उसने कह दिया है कि नीचे की तरफ है. बाद के डाइंग डिक्लेरेशन में तो कह रही है. वो सोफे पे बैठी हुई है. अब ये सर मैं एक करके बता देता हूँ. अभिषेक झारिया को आपने कहा he is the eyewitness to the incident. But let me just have a look at this dying declaration which my learned friend read out. उन्होंने पढ़ा, मैंने मम्मी के लिए प्रियांश विश्वकर्मा का एक नौकर वहां उपस्थित था. उसने मुझे पानी दिया और बाहर चला गया. Now he is not present when the incident takes place. They introduce this man as an eyewitness to the incident, which is completely falsified from this. Either we believe this or we believe that. वहीं पर एक बंदूक पिस्टल रखा था सामने टेबल पर, उसके नीचे पैर के साथ सटाकर रखा एवं लोड किया. आ रही है सर ये बात. सटाकर लोड किया. मैं नहीं समझ पाई. यहां भी पैर के साथ, गॉट दैट लाइन डिक्लेरेशन. यहां भी पैर के पास ही बात आ रही है.
सटा कर रखा और लोड किया। ऐसा नहीं है ना कि लड़की से चली तो आपसे ही है। नहीं, लड़की से मैं तो कह ही रहा हूँ सर कि probably पहले टाइम डिक्लेरेशन समय तो वो तो उसकी कस्टडी में था सर। नहीं, हमारी कस्टडी में था। नहीं, हमारी कस्टडी में नहीं थी। This is absolutely incorrect. Where she is in my custody? It is after when the Jyati Nalchi has been recorded, they say I absconded. After putting her in Metro Hospital, Even if she was not in my custody. even if we say that it is accidental, My lord, but then you took the risk of I took, filing my it. lord, correct. I took the risk. Therefore, I'm saying now this So is then you have to bear it. no. I'm there in custody. Charge sheet has been filed. What is the outcome of the trial? We do not. Now, my lord, one more thing I wanted to point out. हमारे कंडक्ट पे बहुत बात कर रहे थे। आप पेज पूजा का बयान देख लें, पेज 108. लोड इसने किया। Just a moment. Yes. This is annexure A2. This part of annexure A2. Page is 112. फिर इसको थोड़ा सा आप देख लें। She is the person, she is the mausi of the disease who arrives first in time over there and explain everything. मैं उपरोक्त पते पर रहती हूँ। My lord, got it? मैं रेफर टू दिस। Just Well, yes. मैं उपरोक्त पते पर रहती हूँ। बीएड की पढ़ाई लक्ष्मीबाई साहू कॉलेज में पढ़ाई पूरी की है। वेदिका ठाकुर मेरी बड़ी बहन की बेटी है, जिसके बचपन से जानती हूँ। हम लोगों में आपस में साधारण बातचीत होती रहती है। वेदिका से मैंने प्रियांश विश्वकर्मा के बारे में सुना था। मैं उससे कभी मिली नहीं थी। दिनांक 16/6/2023 को दोपहर लगभग 3 बजे at 3 in the afternoon प्रियांश ने मुझे फोन किया और बताया कि वेदिका की तबीयत खराब है, उसको उल्टियां हो रही हैं, यहाँ आ जाओ। मैंने बोला कि कहाँ पर है, तो उसने मुझे अस्पताल का नाम बताया। फिर मैंने कहा कि मेरे पास गाड़ी नहीं है। प्रियांश ने बोला कि मैं गाड़ी भेज रहा हूँ। फिर मैंने बोला ठीक है। फिर मुझे ठीक नहीं लगा कि मैंने उसी नंबर पर कॉल किया, वहाँ कहा कि वेदिका से बात करा दो, तो उसने मेरी बात वेदिका से कराई। वेदिका ने मुझे कहा कि पूजा तुम आ जाओ। फिर मैंने फोन रख दिया। फिर मैंने फिर से कॉल किया तो किसी लड़की ने कॉल उठाया। मैंने बोला कि गाड़ी मत भेजो, मैं ऑटो से निकल जा रही हूँ, किसी की गाड़ी ले लूंगी। तो वो लड़की ने बोला कि गाड़ी ड्राइवर लेकर निकल गया है। फिर मैंने उससे पूछा कि आप कौन बोल रही, तो उसने बताई कि वह पायल बोल रही है। Here another girl comes into play। मतलब पायल बोल रही हूँ। फिर मुझे गाड़ी के ड्राइवर का फोन आया, मुझसे एड्रेस पूछा। मैंने उसे छोटा फुहारा के पास बताई। उसने बोला कि छोटा फुहारे के पास गाड़ी लेकर खड़ा है। फिर मैं वहां पर पहुंची, उनके साथ गाड़ी में बैठ गई, मुझे स्मार्ट सिटी अस्पताल पहुंचा दिया। फिर मैं स्मार्ट सिटी अस्पताल पहुंची तो रिसेप्शन के पास प्रियांश खड़ा था। वेदिका को स्ट्रेचर से लेकर आ रहे थे। वेदिका अस्पताल के कपड़ों में थी, उसके हाथ में ड्रिप लगाने वाली पट्टी लगी हुई थी। मैंने प्रियांश से पूछा कि क्या हो गया है। फिर मैंने वेदिका से पूछा कि क्या हो गया है, तो वेदिका ने मुझे कुछ नहीं बोला। फिर प्रियांश ने बोला कि एम्बुलेंस में बैठो, मैं बताता हूँ। जब एम्बुलेंस में बैठ गई तो बार बार मैं पूछ रही थी क्या हो गया है। मुझे लग रहा था कि यदि उल्टी हो रही तो अस्पताल में पहने हुए कपड़े में क्यों पहनी है। फिर मैंने देखा कि वेदिका के दाहिनी तरफ खून लगा हुआ है, पार्ट ऑफ द बॉडी से। मैंने पूछा कि क्या हो गया, खून क्यों लगाया। प्रियांश ने कहा रुको मैं अभी बताता हूँ। बहुत ज्यादा पूछने लगी तो प्रियांश ने बोला कि इसको गोली लग गई है। प्रियांश ने बताया कि टेबल में खराब पिस्टल रखी थी, जिसे वेदिका ने चलाने के लिए हाथ में लेकर चलाने की कोशिश करी तो गोली चल गई और रिवर्स होकर लग गई। जैसे मैंने सुना कि गोली है तो मैं घबरा गई। नाउ दिस राइट फ्रॉम 3 o'clock immediately I give the information. What they are trying to say, no, I was trying to manipulate everything. Now all these 3 statements have been recorded on 17. That is important, my lord. The statement that the lying declaration which they read out, the first Jati Nalchi and the 161 statement, all these 3 have been recorded on 17, my lord. The first in time is the Jati Nalchi which I read out to my lord, which clearly goes to indicate. One of the question is relevant, which my lord, why I was with a gun, why I loaded it.
That is of course a question, my lord, because I was having that gun. It was not in a workable condition. When she asked me why it is kept, I said it is not in a working condition. And I was trying to show that. That is the simple explanation. Abhishek Jharia's statement, according to Vedika Thakur, her dying declaration, he was not present at that point of time. They have projected him as an eyewitness whose statements have been recorded on 14/7. My lord. Question is, you loaded and you fired. That's all. That is of course there, my lord. I was just that you are having. No, I was just trying to show. जब हम ये कह रहे हैं कि ये चल नहीं रही, तो हम उसको दिखा रहे थे कि ये चल नहीं रही. That is all what we are saying. There's nothing to laugh about. No, sir. There's nothing to laugh. Don't say that, please. What I said was the explanation which came over there, that I'm showing a gun to someone. सर मारने की बात कहीं भी नहीं कही है कि उसने मारा. ये उसने कहीं नहीं कहा. You may not have intention to kill her. No, sir. 302 may not be there. Sir, maybe. But you took the risk. You fired at her. Loaded the gun. I loaded the gun. That's it. सर लेकिन मारने की बात कहीं पूरे केस में कहीं मारने की बात नहीं है. सर मैं एक बार देहाती नालची आप फिर से जरा सा देख लें. देहाती नालची को आप देख लें सर. विचित्र. Yes. घटना स्थल कहाँ है सर? हमारा ऑफिस हैगा. हमारा ऑफिस हैगा. सर एक मिनट सर. वो तो ले घटना स्थल से और मेडिकल कॉलेज अस्पताल रोड के पार मेडिकल कॉलेज है. आप नक्शा देखें सर. ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ना ले जाके इनको दुनिया भर में घुमाते रहे. ये देखें सर आप मैप पे. सिर्फ रोड के उस पार मेडिकल कॉलेज की बाउंड्री. ये सामने इनका ऑफिस है. SS एक घटना स्थल कंचन कलेक्शन दुकान, उसके ऊपर इनका ऑफिस है और सामने मेडिकल की बाउंड्री. ये रोड है सर बीच की, और धनवंतरी नगर परवार रोड और सामने मेडिकल. Sir, this is something, as my lord at the inspection said, these are natural processes. A person tries to save himself. So this is nothing unusual. If I know someone, I take a person over there who's required some casualty or something like that. So I take this girl over there. From there, finally, I take her to a very good hospital, that is Metro Hospital. And she's been there. और माँ जो बयान दे रही है वो ये कह रही है 5 दिन बाद उसका ऑपरेशन करा गया. So the hospital also involved into that. The police is also involved into that. If you go by the statement what my learned friend is making, the police is involved, the hospital is involved, everyone is involved into that. And everyone wanted to save me. Sir, it is the question about the convenience. Say, for example, I have some problem. I'll try to approach someone who is known to me. There's nothing wrong in that. When they say, no, we can't handle, I'll go at some other place. So there's nothing wrong in that. Wrong would have been, I would have allowed her to die, sir, if my intention was that. मैं उसको क्यों कहीं लेके जाता, मैं क्यों अस्पताल तक लेके जाता, मेट्रो हॉस्पिटल क्यों लेके जाता, क्यों उसकी मौसी को बुलाता, क्यों उसके घर वालों को खबर करता. If I really intended that she is required to die, sir, I would have fired another shot. It was as simple as anything. Who stopped me over there? No one could have stopped me because I never intended that act. Your intentions are clear. You don't want to kill her, but I never wanted to kill her, sir. You are having knowledge that you are Sir, having gun in the hand and you it fired. may be, sir, it may be an act for 304A, sir. It may be an act for 304A. 304A नहीं बनेगा. Sir, rash and negligent act can be there. It is culpable homicide. Sir, culpable homicide because sir, अगर हमको जरा भी ये उम्मीद, अगर हमको उसको ये था कि ठीक है, हमें नॉलेज थी, उसके मरने की अगर हमें उम्मीद होती, तो हम उसे क्यों कहीं लेके जाते? It is a rash and negligent act, I would say, sir. It would not be a 304-2 or 304-1. If I really wanted to see, sir, ये बात ठीक है, चलो मेरे पास पिस्तल है, उससे गोली चल गई. अब अगर उसको मरना ही था, तो ये नॉलेज तो नहीं थी. I never intended. This is clear. I would have allowed her to die. I would not have taken her to 2 hospital and to get an MRI done. मैं उसके परिवार वालों को नहीं बुलाता. And I never had this knowledge. जब पहला स्टेटमेंट देखते हैं, I never had this knowledge that it is in a workable condition. वो लड़की खुद बोल रही है. And this is also may extend to 10 years. So that would be with intention, sir. अब देखें, whoever commits culpable homicide not amounting to murder shall be punished with imprisonment for life or imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine if the act by which the death is caused is done with the intention of causing death. So I said, maximum this would be a case, finally it would turn out to be a case for 304A. 304A तो कहीं से नहीं जाएगा. सर इसलिए 304A में इसलिए बोल रहा हूँ कि एक rash and negligent act है. You voluntarily took the risk of loading the gun, then you fired it also. Sir, under the circumstance, I was trying to show it is not working.
अगर हम पहला बयान You could देखते have fired it in the air. सर मैंने तो पैर की तरफ नीचे की तरफ करा था, मैंने पैर भी एम नहीं करे, नीचे की तरफ करा था सर, उसके बयान से ये बात आ रही है. ग्रेजुअली इट गोज ऑन इम्प्रूविंग. And who is the did not lodge the FIR? सतीश, the investigation. क्या रैंक है इसका? SI. SI है. SI. नहीं ये तो प्रभारी. No, he is the investigating officer बाद में. सर थाने में आप इस मेरा एक और निवेदन है सर कि वो जो एक जो कंप्लेंट So हमने SP will inquire regarding it. एक और मेरा एक निवेदन सर एक निवेदन हमारा भी है कि जो कंप्लेंट अभिषेक झारिया ने दी है उसको भी बुलवा लिया जाए. वी हैव गिवन अ कंप्लेंट टू द एसपी सर. We also have a copy of that. We can also produce it. That may kindly be called for, sir. That may also be looked into if the conduct of the police is there. Abhishek Jharia is being manipulated now. Who is he? He is the employee of the accused. Now, if he's manipulated, every manipulation is being done by me, my lord. It's very on the police on the one hand is saying I immediately went away. I ran away from Metro Hospital. If this is the stand of the police, how I am manipulating these situations? Abhishek Jharia's statement has been recorded. Who makes a complaint to the police? He forcefully his statements have been got recorded. उसको उसके ब्रदर को थाने में ले जाके बैठा के रखा था कि ऐसा बयान दो. One can understand his 160, but what about 164 statement? नहीं झगड़ा हो रहा था कहाँ से आ गया? किसका? This must have done by police. Yes, this has been done by the police. The girl is not saying this. Why facts are being twisted? जैसे हैं वैसे आप लोग क्यों नहीं लिखते हो? Statement of the eyewitness, my lord. कहाँ से आ गया? तीन जगह डिसीज खुद बोल रही है कि साहब वो सर मेरा निवेदन गोली चल गई. सर सीएसपी पहली बार जो सीएसपी उसके डाइंग डिक्लेरेशन के पहले बोल रही है. कहीं नहीं बोलती गलती से गोली चल. सर वो सीएसपी सर आप उस सीडी को भी देख लें जो हमने लगाई पेन ड्राइव, आप उसको देख लें. पूरे चलान में आपने मीडिया में किसका कट कॉपी पेस्ट है? नहीं हमने कहीं कट कॉपी पेस्ट नहीं करा. Applicant has filed first application. Grant of bail. Police. Learned senior counsel appearing for applicants submitted that no case of murder under section 302 is made out against the applicant. Full stop. Deceased herself has given 3 statements which can be taken as dying declaration, in which it has been stated by her that gun was not functioning and it was loaded and it misfired, due to which she received injuries. It cannot be said that applicant was having any mens rea or intention to murder the deceased. It is further submitted that applicant took her to hospital for treatment and also informed all the relatives. Full stop. It was an accidental fire and therefore offense will only be under section 304A of Indian Penal Code, which is punishable up to 2 years of imprisonment and fine. Full stop. No offense under section, neither offense under section 304 will be made out. In these circumstances, applicant be released on bail. Full stop. Learned senior counsel appearing for objector as well as government advocate appearing for state oppose the application for grant of bail. It is submitted that in statement given to police and also to executive magistrate by deceased, it has been stated that applicant loaded the gun and he fired it. Full stop. Gun was fired on the stomach, which hit on the which hit the girl on her underarm, and she received injuries. Bullet was stuck in her spine. She was taken to various hospitals. Report was not immediately given to police, and 4 bullet marks was found in the room, which suggests that applicant may have repeatedly fired on the victim. Further reliance is placed on the statement of one क्या नाम है झारिया का? अभिषेक झारिया. अभिषेक झारिया सर. One Abhishek Jharia, who has stated that there was some quarrel between the deceased and the applicant had fired the gun on the deceased. Full stop. Reliance is also placed in 164 statement of said person. Full stop. It is submitted that applicant
after causing injury to the girl, did not took her to the hospital for a long time. And in the evening, she was taken to hospital. It is also argued that medical college was just 200 meters away from the place of incident, and applicant has taken the victim to an क्या है BDS doctor, कौन से doctor? BHMS. Was to a doctor who was BHMS and was not having facility and surgeon to treat the victim, full stop. In these circumstances, it cannot be said that offense is under section 304A and no offense under section 302 or 304 of Indian Penal Code is made out against the applicant. Heard the counsel for the parties, considering the facts and evidence available on record, it is clear that gun was not functioning. But applicant loaded the gun and took the risk of firing the gun on the stomach or on the or near the feet of the deceased, which may have recoiled, or there may have been some jerk in the pistol which resulted in the injury under the armpit of the girl. From aforesaid incident, it is clear that applicant was having full knowledge that he was having a dangerous and lethal weapon in his hand. He loaded the weapon and also took the risk of firing that weapon towards the girl. It does not matter whether he pointed it on his head or some other portion of the body, but he voluntarily and with full knowledge took the risk of firing a lethal weapon towards the girl, which resulted in the injury, and act appears at this stage act appears to be made out. The offense under section 304 appears to be made out against the applicant, which is punishable with life imprisonment or up to imprisonment up to 10 years. RI. Considering aforesaid facts and circumstances of the case, bail application filed by the applicant is dismissed. Superintendent or officer in charge of taking disciplinary action or legal action against the delinquent employee is directed to inquire into the fact that who was the officer who was present in the police station and refused to register the FIR due to misconduct of the applicant, contrary to various judgments which has been passed by the apex court, where it is the duty of police officer to immediately register an FIR on report of an cognizable offense, did not register the offense immediately. Had the offense been registered immediately, life of an innocent person could have been saved. In such circumstances, Superintendent of Police / DIG IG is directed to take action against the delinquent police officer who refused to register FIR at police station, and also directed to take action against all the hospitals who treated the girl without being informing police that offense has taken place. Full stop. With the aforesaid directions, application is dismissed and disposed of. My lord, may I make two requests, my lord. One, my lord, liberty may be granted after the examination of Abhishek Jaria, my lord. And secondly, my lord, any observation made over here would not affect the merits of the case. Observation made by this court while passing this bail order will not affect the merits of the trial, and applicant will be at liberty to file repeat bail application after examination of Abhishek Jaria. Abhishek Jaria. Her mother's statement is the mother to Material witness. सर मटेरियल सर आई विटनेस तो कोई है ही नहीं उसमें सिवा अभिषेक जारिया के। बाकी मटेरियल विटनेस आ जाएंगे फिर तो सर वो तो सालों साल का क्या हुआ सर, आपने सब कुछ पहले कर लिया, आपने मौसी को पकड़ा, मौसी ने क्या बोला कि जब आई तो वेदिका ने कोई Abhishek Jaria and executive magistrate who recorded and the mother मदर तो थी, मदर इज नॉट देयर सर, मदर जब वो अस्पताल पहुंची सबसे पहले ओरल नहीं ओरल नहीं डिक्लेरेशन है ना सर, मदर की बात जैसी executive magistrate is there. Yes, a copy of the order kindly be provided. Copy of order. Grateful, Maloj.
My lord, this is first bail application under section 439, my lord. Offences are under section 307, 323, my lord, and 294, my lord. My lord, in this, my lord, the co-accused bail was there, my lord. आप कब से हैं जेल में? My lord, I am in custody 11/8/23. First of all, my lord, I like to bring some facts. Yes. My lord, in this bail of Pawan was Agarwal was listed, whereby my lord has dismissed the bail on 8/12 with a liberty to renew after 6 months. What weapon was used? My lord, in fact, I am just came down. Yes. There are these 4 accused person and the victim, my lord, were doing a party on a 3rd floor. They were doing a party. While doing party, my lord, some altercation took place. When some scuffle take place, one of the person, my lord, fell down. This was the victim. When he fell down, my lord, he was immediate. The date of incident is 25/7/2023. सर इनने दोनों हाथ नहीं सर, एक मिनट निवेदन निबंधन उसमें से जब इन्होंने रोजनामचा जो इमीडिएट थाने में दिया जो डॉक्टर ने, उसमें उसका भाई लेके जाता है अस्पताल में, वो कहते हैं कि हाथापाई हो रही थी तो वो नीचे गिर गया। इसमें एक की बिल खारिज हुई। हाँ सर, वो मैं वही मैंने सर उसमें वो पॉइंट रोजनामचा का उस दिन आर्ग्यू नहीं किया था। बात का डायरेक्शन है सर, लाइव स्ट्रीम में देख रहा था, उसमें उन्होंने रोजनामचा में पॉइंट वो नहीं रेस किया। रोजनामचा में जो स्पष्ट आया है कि भाई ने, और 27 की FIR सर, 2 दिन बाद FIR हुई घटना के। रोजनामचा जो 25 को रजिस्टर्ड हुआ है, जब वो डॉक्टर की रिपोर्ट वहां गई है, डॉक्टर के सामने उसका भाई लेके गया। मैं सिर्फ 2 लाइन पढ़ता हूँ। 30वीं मंजिल की छत पर काम कर रहे थे, साथ में काम करने वालों से बहस होने पर झूमा जब्ती में छत से नीचे कर गया। सर जैसे भाई नहीं लेके गया, ये लोग खुद लेके भाई तो वहाँ पे था नहीं सर, ये बाहर थे, लोग लेके गए। इसमें जैसा पिताजी नॉट एन आई विटनेस। भाई आई विटनेस है क्या? नहीं माय लॉर्ड, आई विटनेस। Applicant has filed. My lord, I will withdraw. Counsel for applicant prays for withdrawal of bail application. Prayer is allowed. Application is dismissed as withdrawn with liberty to file repeat application after a period of 6 months. My lord. Number 71. Paying for 1 week time, my lord. As prayed adjourned 1 week. Obligement. Number 72. Chandra Srivastava. My lord, this is the first bail application under section 439. Offences are under section 302, 341. I'm seeking this bail on the ground of parity. There were 3 accusers in the matter. They have allegedly assaulted the deceased with cheap and fist. 2 accusers have been granted bail. The orders are on. This is the second order. Yes, same. सेम है और हॉस्टाइल भी हो गया मतलब जो मेन। All the material witness have been hostile. 50,000 one surety, but he is same on grounds of parity. Obliged, my lord. Number 73. This is second bail application under section 439. Also 34 Excise Act का मामला रजिस्टर्ड हुआ था। First dismiss हुई थी with liberty to file after examination of seizure witnesses. Lots of examine हो गए, returned hostile. In Exhibit A3 copies. Applicant has filed second application. Police station offences. Counsel appearing for applicant submitted that independent seizure witnesses had turned hostile. Earlier application was dismissed to file repeat application after examination of seizure witnesses. Government advocate opposed. Heard considering facts and circumstances allowed conditions. Grateful. Number 74. Repeat application है मानो in the last date of hearing मानो directed the state to file मानो DNA report. In fact, I am in jail मानो since सर DNA रिपोर्ट के लिए हमने सर सब मांगा 25/4/23 से DNA यूनिट से एक लेटर आया सर कि हम 1 सप्ताह का समय और प्रायोरिटी बेस पे इसको कर रहे हैं। लिस्ट आफ्टर 2 weeks. नेक्स्ट वीक करने मानो वीक कब आ जाएगा, फिर बढ़ेगा, नहीं आएगा तो 7 दिन मांगा है तो 10-15 दिन तो लग ही जाएंगे। वीक कमेंसिंग। Number 75. Shukla. And I am appearing in the connected matter, my lord. Yes. Mine is the first bail application. That is for Jiten Kumar Bin. But the offence registered is under section 294, 323, 324, 506, 307, 302, and 34. But the allegation are that the deceased, along with his friends, was standing
in a Mela, and accused with other his friends came into that Mela, and then where the scuffle happened, and the present accused Arvind and Jitendra has caused injury to the deceased. I don't know my With what? Brought by knife. By knife. By knife. But the Eyewitnesses are also there. lot of eyewitnesses are there. eyewitnesses है इसमें सर ये connected matter 75 number. Yes. ये already सर इसमें decide हो गई 75 में जो है सर उसमें order है. Merit में decide. मेरिट पे डिसाइड हुई है 4 आई विटनेस के होने के बाद के लिए इसमें ऑर्डर था सर कोई विटनेस भी सेम है इनको आइडेंटिफाई किया है इनको. Although, Lord, my name has not been in the FIR, my lord, and earlier application filed by co-accused was considered on merit. I have filed order sheets of the trial court. The witnesses are not turning up, my lord, since August 2023. Even, my lord, the case was last listed on 29/11 before the trial court. They are not turning up. My lord, may see the order sheet from page 10 also. So file it. ये क्या है? But that is the last order sheet, but I have filed since August 23. A2 at page 10. But on the 3-4 dates has been given, but the complainant and the other witness, Deepu Shah, who is also injured, they are not turning up. कौन है witnesses जो नहीं आ रहे? Indral Kumar Shah and Deepu Shah. कब से नहीं आ रहे हैं? 28/8. Malon में see at page 10. Yes. Page 10. Liberty was already there to you. कहाँ है? Where is order? Earlier order. Malon at page 10. From page 10 A2 annexure A2. That is in 75.1. 175.1. Both Indral and Deepu were, even warrant has also been issued, my lord. Where is order of court? A2 में तो नहीं है. A2 में तो order sheet ये court order sir 75 item was 75. Jitendra 70. अरविंद में order. हाँ वो अरविंद में. बारह सितंबर का है सर ये. आप जेल में भी आपको बहुत ज्यादा डिले भी नहीं है ट्रायल में. But it is we are February 23 से है. मर्डर केस है. then my lord I'll Applicants withdraw. I'll withdraw. counsel for applicant prays for withdrawal of bail application with liberty to file repeat application as granted by order dated 12/9/23 in MCRC number 33618 of 23. Prayer is allowed. Application is dismissed with similar said liberty. My lord, or if the witness didn't turn up, then I'll. Prosecution is directed to keep the said witnesses present in court for their examination. State, Direct Superintendent of Police. Order. Yes, next. दोनों में से. Number 76. This matter, I'll only argue on the point of delay, my lords. I've been in custody since last 4 years and 4 months. The contraband is, my lords, alpha zomal. It is in commercial quantity. Commercial quantity है. Commercial quantity है. And it is from your possession. Yes, my lords, as per the FIR, that is. So withdraw it after examination of independent witness. 4 years, yeah, Honorable Court. 4 years already I've gone through custody. You are 4 years and 4 months. 4 साल से as an under trial, my lords. हम इसकी सर कमर्शियल क्वांटिटी है सर, लेकिन इनके पास से
है 1500 ग्राम। कितना रिकॉर्ड है इनका? यास्मीन नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद सर, वो तो अगेंस्ट चार्ज है सर। अगेंस्ट चार्ज है जी। और ये यास्मीन का कितने रिकॉर्ड्स हैं? यास्मीन के संबंध में रिकॉर्ड नहीं आया सर इसमें डायरी। 4 months इज अ लॉन्ग टाइम। ठीक वगैरह भी सुना सर, ऑर्डर शीट भी फाइल नहीं की, क्या पोजीशन है ट्रायल की। तीन साल ही हुए ना आपको? I have wrongly mentioned it. Date of arrest is 28/2019. It is 19। My lords. कोई रिकॉर्ड है इनका? नहीं रिकॉर्ड नहीं सर, लेकिन इन्होंने सर ट्रायल की कोई पोजीशन क्या है वो कहीं। ठीक है, 4 साल है, अपने आप ही पोजीशन पता चल रही है। जो है Applicant has filed. This is a repeat application. This is a repeat. Second application under section 439 police station offences. Counsel appearing for applicant submitted that applicant is first offender with no criminal records. As per prosecution version, 1500 grams of क्या मिला है? Alpha Zomal, my lords. Alpha Zomal is found with the applicant. Commercial quantity of said drug is 100 grams, full stop. It is submitted that applicant is in jail since last 4 years, full stop. She is a woman. There is no likelihood of completion of trial in near future. In these circumstances, applicant be released on bail. Government advocate appearing for state opposed the application for grant of bail. It is submitted that commercial quantity of drug has been seized from the applicant and there is presumption of guilty mind against the applicant. Heard the counsel for the parties, applicant is in jail since 20th/8/2019 for about 4 years. 4 years, period of 4 years under trial reflects towards delay on part of prosecution to conduct the trial. Considering aforesaid circumstance, application is allowed. Applicant be released on bail on furnishing personal bond to sureties 2 lakhs. Yes. चार्ज किया कुछ है इसमें? पायलट, इसमें हमसे कोई जब्ती नहीं है और सुनेंगे आपको आराम से। ट्रायल क्योंकि आफ्टर वेकेशन उसमें भी जो है तो कहीं नहीं 27 में भी कहीं नहीं पहले आया शुरू में, ना अपने अगेंस्ट कोई भी ना कोई जब्ती है। आपको आफ्टर वेकेशन सुनेंगे। जस्ट आफ्टर वेकेशन